सबको बहुत बहुत नमस्कार. वेलकम टू द क्लास एंड वेलकम टू द क्लास ऑफ ऑर्थोपेडिक्स. आई एम डॉक्टर पर्व लूथरा, योर faculty of ortho. So this is our fifth day in the series. Technically it should be sixth day, but because of some technical errors in the morning hours, we somehow decided not to post that video because there was a lag or some internet issue. ठीक है, इसीलिए आज अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना फिफ्थ डे ऑफ ऑर्थोपेडिक्स. और ये फिफ्थ डे ऑफ ऑर्थो में भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ट्यूबरकुलोसिस एंड डिफॉर्मिटी. ठीक है, और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बार बार पूछा भी गया है आप लोगों से. ठीक है, सो ट्यूबरकुलोसिस एंड डिफॉर्मिटी में जो टॉपिक्स हैं हमारे डिस्कशन के लिए वो ये हैं. वन इज द ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन. ये सारा मैंने अभी एक दो दिन पहले ही दो दिन हो गए, 2 दिन पहले ही हम लोग ने लेक्चर लिया था. तो उसी दिन मैंने ये सारे जो है ना टॉपिक के नाम लिखे थे, बट अनफॉर्चुनेटली हम लोग को टॉपिक जो है वो वो जो है वो कैंसिल करना पड़ा था सेशन. ठीक है, तो एक पार्ट तो आज जो है ना मेरे पास में ऑलरेडी प्री रिटन है. ठीक है, दूसरा ऑफ कोर्स अपने को लिखना है. ठीक है, तो टेक्निकल टीम ये थोड़ा सा यार इसको मेरे को मेरा साइज छोटा कर दो. ये वाला जो है ना इसको थोड़ा सा साइज को आई मीन जो फोटो आ रही है उसको साइज को जो है थोड़ा सा कम कर दो. ठीक है, चल ठीक. तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट एक एक करके टॉपिक्स के बारे में. द ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, और शायद आज का जो सेशन है वो छोटा हो जाएगा बिकॉज वी हैव ऑलरेडी रिटन द स्टफ. ठीक है, सो ट्यूबरकुलोसिस एंड डिफॉर्मिटी. तो सबसे पहला टॉपिक है बेटा टीबी ऑफ स्पाइन. टीबी ऑफ स्पाइन में गिब्बस पढ़ेंगे, गिब्बस डिफॉर्मिटी पढ़ेंगे. उसके बाद में टीबी ऑफ हिप पढ़ेंगे. देन ट्यूबरकुलोसिस ऑफ नी के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. And after TB of knee, we will discuss about the spina bifida and the wry neck. तो ये सारे टॉपिक जो है हम लोगों को डिस्कस करने हैं. एक बार मैं ऑडियो फिर से चेक कर लूं. ठीक है, ऑडियो ठीक आ रहा है ना? ठीक है, ऑडियो ठीक आ रहा है ना? ठीक है, हाँ ऑडियो सही है, परफेक्ट. चल, तो सबसे पहला टॉपिक है बच्चे ट्यूबरकुलोसिस. ठीक है, होने के बाद में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे कैसे इस पर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप. ठीक है, तो देखो ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप का बड़ा सिंपल सीधा सा फंडा है that you have TB as the second most common musculoskeletal tuberculosis after TB spine. तो TB जो स्पाइन है वो अल्टीमेटली द वेरी कॉमन TB. ठीक है, मोस्ट कॉमन TB. ठीक है, तो TB स्पाइन जो है वो मोस्ट कॉमन TB होता है. बाकी TB ऑफ हिप जो है वो सेकंड मोस्ट कॉमन TB है आपके पास में. ठीक है, सेकंड मोस्ट कॉमन TB इज गोइंग टू बी योर ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप. ठीक है, तो वैसे भी आप याद कर लो कि हिप कितने होते हैं. देयर आर 2 हिप. ठीक है, 2 हिप्स होते हैं, तो वहां से आप याद कर सकते हो. सेकंड मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल टीबी. ठीक है, हाँ जी. उसके बाद में हम लोग बात करते हैं अबाउट दी साइट. तो देखो वैसे तो बहुत सारी साइट्स हैं. ठीक है, लेकिन जो सबसे ज्यादा देखी गई है दैट इज द रूफ ऑफ द एसेटाब्यूलम. सो अगर आप इसको देखो तो दिस इज योर हिप जॉइंट. ठीक है, दिस इज योर हिप जॉइंट और ये एसेटाब्यूलम है. This is acetabulum. This is nothing but epiphysis. This is the neck region. और ये नीचे वाला क्या है, trochanter है, और वो भी greater trochanter है, ये वाला. So what is the site of tuberculosis? So remember the site, most common site is acetabular roof. ठीक है, most common site is acetabular roof. उसके बाद में आता है ये, this is called as epiphysis. Then comes this part, this is called as the neck. ठीक है, फिर आता है ये वाला पार्ट, इसको आप क्या बोलते हैं, ग्रेटर ट्रोकैंटर. ठीक है, सो एसेटाबुलर रूफ है, एपिफाइसिस है, नेक है, ग्रेटर ट्रोकैंटर. क्लिनिकल फीचर्स की हम बात करें, देखो जहां पर भी मैं टीबी की बात करूंगा कुछ एक चीजें आप लोगों को ऑलरेडी आनी चाहिए, पता होनी चाहिए. व्हाट? वन इज फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस. ठीक है, फीवर, नाइट स्वेट्स, वेट लॉस, एज वेल एज योर लॉस ऑफ एपेटाइट. ठीक है, एज वेल एज योर लॉस ऑफ एपेटाइट. तो ये कुछ एक फीचर्स हैं, बहुत ही कॉमन फीचर्स हैं. वन इज फीवर, देन इज नाइट स्वेट्स, देन वेट लॉस एंड लॉस ऑफ एपेटाइट. ठीक है, अब ट्यूबरकुलोसिस में नाइट क्राइज का भी फंडा होता है. देयर इज समथिंग व्हिच इज कॉल्ड एज नाइट क्राइज. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय नाइट क्राइज? नाइट क्राइज का ये मतलब होता है कि ड्यूरिंग स्लीप, ओके, द टाइम व्हेन यू आर स्लीपिंग, ड्यूरिंग स्लीप व्हाट हैपेंस इज, फॉर एग्जांपल दिस इज योर मसल. ठीक है, मान लीजिए कि ये आपकी मसल है. सो ड्यूरिंग स्लीप व्हाट इज गोइंग टू हैपन, दीज मसल्स आर गोइंग टू रिलैक्स.
And since the muscles are going to relax, there will be increase in blood flow. And because there is increase in blood flow which is happening, this is responsible for causing, yaad rakho, because there is increase in the blood flow, this is responsible for causing what? This is responsible for increasing the inflammatory material, increasing the inflammatory substances delivery. ठीक है, inflammatory substances जो है वो deliver होने बढ़ जाते हैं to your muscles. Okay, so muscles are going to relax where there is increase in blood flow and inflammatory substances are going to get deposited or delivered over here. ठीक है, अगली चीज हम लोग डिस्कस करते हैं अबाउट द ऑनसेट. सो रिमेंबर दैट ऑनसेट, इफ यू टॉक अबाउट ऑफ ट्यूबरकुलोसिस, इट इज इंसीडियस इन ऑनसेट. ठीक है, ट्यूबरकुलोसिस इज इंसीडियस इन ऑनसेट and it is chronically progressive. It's a chronic disease. Tuberculosis is itself a chronic disease, and just remember that it is insidious in onset. Okay. Then you have to understand that the earliest symptom is going to be limp if it is TB hip. So see, limp has got LIP, hip has got HIP. So remember this, limp and hip. Okay, TB hip, the first symptom is limp. And which is the gait which is there? So the gait is going to be antalgic gait. ठीक है, कौन सा gait होता है यहाँ पे? There is antalgic gait which is going to be there. Antalgic gait. Now see, understand, because it's an infection, of course pain has to be associated with that. Pain रहेगा ही रहेगा. Range of movement is going to decrease. Why there is decrease in range of movement? Because of course it is I should say कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर में हिप को, लिम्ब को मूव करने में ज्यादा पेन महसूस होगा. सो दैट्स व्हाई द रेंज ऑफ मूवमेंट इज गोइंग टू बी डिक्रीज. एंड सिंस द रेंज ऑफ मूवमेंट इज डिक्रीज, देयर इज मसल वेस्टिंग आल्सो. व्हाई देयर इज मसल वेस्टिंग? एंड स्पेसिफिकली कौन से रीजन में? थाई रीजन में, ग्लूटियल रीजन में देयर इज मसल वेस्टिंग. Now, since there is muscle wasting, of course, there's going to be limb length discrepancy that is going to be there. Okay, in both the limbs, there is going to be discrepancy. So very simple, pain is going to be there. The range of movement is decreased. Why? Because there is muscle wasting. Why there is muscle wasting? Because the gluteal region and the thigh regions are at fault, and that is why there is going to be a limb length discrepancy. And since there is muscle wasting and stuff which is happening, please understand that this leads to a deformity as well. Okay, deformity भी होने वाला. Now, क्या वहां पर abscess होगा? हाँ जी बिल्कुल, yes, abscess is going to be there, and this abscess in TB is itself a cold abscess. Why this is a cold abscess? Because we have seen that tuberculosis is an infection which is tuberculosis of hip in particular is an infection which is without inflammation. There is no inflammation. Now, why there is no inflammation? There is no inflammation. It's a characteristic of TB. Okay, and if there is no inflammation, there is no heat. Okay, and you know very well that normally we have seen that the inflammation is responsible for local rise in temperature, and since there is no inflammation, there is going to be no heat production, and that is why this abscess is called as a cold abscess. ठीक है, इस abscess को हम लोग बोलते हैं cold abscess. Coming on to two important problems which are called as secondary problems. Just remember, if I talk about these secondary problems, one is going to be lordosis, other is called as scoliosis. Now, what is there in lordosis and what is there in scoliosis? Lordosis, so आपको पता ही होगा कि एक बंदा है लॉर्ड पुनीत, देखा है आप लोगों ने? लॉर्ड पुनीत कितनी भी गंदी, बेकार, वाहियात, बेहुदा रील्स बना ले, लेकिन फिर भी उसका काम जो है वो बढ़ता जाता है, उसका काम जो है वो आगे चलता जाता है. So, आगे चलना मतलब एंटीरियर कर्वेचर. ठीक है, आगे चलते जाना मतलब एंटीरियर कर्वेचर, दैट इज कॉल्ड एज एग्जैजरेटेड एंटीरियर कर्वेचर. ठीक है, so lordosis is what? Anterior curvature, and that's called as exaggerated anterior curvature. Okay, so lordosis is nothing but exaggerated anterior curvature. What is scoliosis? Scoliosis is exaggerated lateral curvature. Okay, scoliosis is what? Scoliosis is exaggerated lateral curvature. Okay, and what is kyphosis? So हिंदी में एक शब्द होता है जिसको हम लोग कुब्बा बोलते हैं, इंग्लिश में उसको hunchback बोलते हैं. So kyphosis is kubba is hunchback. Okay, and remember that kyphosis is posterior curvature exaggerated. So if there is exaggerated posterior curvature, we call it as kyphosis, that is hunchback. Okay. Coming on to the classification after the clinical features. Classification, the classification itself is called as Tooley's classification. Tooley's classification is going to tell you that there are 3-4
grades, types, you can remember synovitis, early arthritis, advanced arthritis and subluxation. कि पहले क्या होने वाला है, पहले फॉर एग्जांपल दिस इज योर bone. Okay, I know this is a very bad drawing. Okay, okay, leave it. So for example, this is the joint. Now this joint has got synovial fluid and of course synovial membrane. Now this synovial membrane is responsible for having the inflammation, and that inflammation is called as synovitis. Synovitis has got a classical deformity that is called as Faber. Okay, Faber. Okay, okay. Whereas early arthritis, advanced arthritis and subluxation, all these three has got deformity which is called as Faber deformity. Now please understand, जैसे एक वो बहुत फेमस हुआ था बीच में मीम, दरवाजा खोलो बेटा कौन आए हैं, फादर आए हैं. So early arthritis, advanced arthritis, subluxation, these are big things, यानी फादर आए हैं, बड़ी चीजें हैं यानी कि फादर आए हैं, सिंपल. ठीक है. So this is how you can remember this, that early arthritis, advanced arthritis and subluxation has got father deformity. What is Faber? Faber is flexion, abduction, external rotation. देखो याद ही करना, इसमें तुम कुछ समझने वाला नहीं है. And what is father? Flexion, adduction and internal rotation. ये भी याद करना है, इसमें कुछ समझने वाला नहीं है. ठीक है. But what you have to understand now, synovitis has got lengthening, apparent lengthening. Synovitis has got apparent lengthening. ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हो कि साइनोवाइटिस मतलब इन्फ्लेमेशन, इन्फ्लेमेशन मतलब यहाँ पर बहुत ज्यादा सेल्स आ रहे हैं, सेल्स आ रहे हैं तो इसकी लेंथ को जो है वो बढ़ा रहे हैं. ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन रिमेंबर apparent lengthening. Now what will you see on x-ray? So on x-ray you are going to see nothing but a haziness of the articular margins, because of course articular margins have got the covering of synovial membrane, and since the synovial membrane is covering them, if the synovial membrane is having synovitis, what is going to happen? There is going to be osteopenia plus bone lesions. There is going to be haziness of articular margins. What else you can see? So remember, early arthritis, advanced arthritis, and of course subluxation has got father deformity, that is flexion, adduction and internal rotation. And now understand that this is going to have apparent shortening, advanced arthritis is going to have a true shortening, and subluxation has got a gross shortening. यानी तीनों में shortening है, पहले वो apparent होती है, फिर वो true shortening हो जाती है, और फिर वो gross shortening में चली जाती है. ठीक है. Now early arthritis, for that matter, please understand it has got osteopenia and bony erosions. Okay, early arthritis for that matter has got osteopenia and bony erosions. ठीक है ना. आर्थराइटिस में क्या होने वाला, बोन भूर जाएगी, खत्म होने लग जाएगी. So this is called as osteopenia. And one more thing which is going to be there is called as bony erosion. So osteopenia and bony erosions are going to be there. What will you see in advanced arthritis? In advanced arthritis, there is destruction of articular surface. There is destruction of articular surface, and of course there is going to be joint space reduction as well. There's going to be joint space reduction as well. So there is destruction of articular surface and joint space reduction. But about subluxation, so please remember, in subluxation you will have what? जो फीमर का हेड है वो एसिटाबुलम से इधर उधर चला जाएगा, और एसिटाबुलम ढूंढती रह जाएगी कि ओ मेरे फीमर के हेड. ठीक है, ओ मेरे फीमर के हेड, चहनाए मेरे दिल को दुआ दीजिए. यानी कि एसिटाबुलम ढूंढती रह जाएगी कि फीमर का हेड कहाँ गया, और इसी को हम लोग क्या बोल देंगे, दिस इज कॉल्ड एज सबलक्सेशन. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज सबलक्सेशन. ओके, कमिंग ऑन टू द अदर क्लासिफिकेशन. अभी तक जो हमने डिस्कस किया वो टूलीज क्लासिफिकेशन थी. अब जब हम डिस्कस कर रहे हैं वो टूलीज नहीं है. इसमें 7 तरीके की क्लासिफिकेशन बोली है उन्होंने कि जब भी ट्यूबरकुलोसिस हिप के पास जाएगा, प्लीज रिमेंबर 7 चीजों का आपको याद रखना पड़ेगा. 7 चीजें क्या है? नंबर 1, if you'll write it, it becomes ONE 1, और उसमें N and O, if you reverse it, तो it becomes NO. NO is non. Okay. Similarly, if you see 2, so 2 का क्या मतलब होता है? दिल जुड़े बिना ही टूट गए. ठीक है, तो दिल टूट गया तो उसके 2 हिस्से हो गए. Whenever comes 2, that reminds you of separation, and since it's separation, of course the acetabulum is getting separated from
the head from the neck of the femur, that is called as wandering acetabulum. ठीक है, that is called as what? That is called as wandering acetabulum. ठीक है. 3 nari, 3 sets you free. ठीक है, 3 is setting you free. nari, 3 is setting you free, यानी कि now there will be free. तो free मतलब what? There is going to be dislocation, यानी कि जो फीमर है वो डिसलोकेट हो जाएगी. तो यहाँ पर 3 में आपको डिसलोकेशन दिखेगा. 4, ठीक है, ये दिल मांगे मोर. 4 ये दिल मांगे मोर. मोर मीन्स व्हाट? नाउ ओनली सिर्फ और सिर्फ, ध्यान रखना, सिर्फ और सिर्फ आपको टीबी नहीं है, एक और डिजीज आ गया. 4 दिल मांगे मोर. मोर एक और डिजीज. एक और डिजीज कौन सा? पर्थिस डिजीज. ठीक है. 5 एक ताली दूसरी ताली से टक करके बजती है, उसको हाई फाइव बोलते हैं. 5 जस्ट रिमेंबर हाई फाइव. ठीक है. सो हाई फाइव. ठीक है. तो ऐसा सोचो कि आपकी एसेटाब्यूलम और ये नेक है फीमर का, एसेटाब्यूलम बाहर निकल के हाई फाइव देने की कोशिश कर रही है, लेकिन जो ये हेड है ये एक सख्त लौंडा है, ये नहीं लेना चाहता है. क्या नहीं लेना चाहता है? हाई फाइव. यानी कि कौन प्रोट्रूड हो रहा है? acetabulum is still protruding. So acetabulum is protruding. That is called as protrusio acetabuli. Protrusio acetabuli. ठीक है. What is 6? 6 is called as, very simple, 6 atrophics. Okay, 6 you can remember with atrophics. 6 atrophics. So 6 atrophics means what? There is atrophy. There is going to be atrophy. एंड 7 में क्या है? देखो भाई, पंजाबी में तो सीधी बात बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? कौन सा सोटा कुछ बोलते हैं, मैं खुद भी भूल गया इसको, क्या बोलते हैं? समथिंग सोटा बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सोटा. कौन सा सोटा? आई डोंट रिमेम्बर एग्जैक्टली, बट या. तो 7 इज एक्चुअली मोटर एंड पेसा. कुंडी सोटा बोलते हैं इसको. ठीक है. कुंडी सोटा. हरियाणवी में भी वही बोलते हैं. इफ यू लाइक, इफ समबडी इज फ्रॉम हरियाणा तो आप लोग को पता होगा, भांग रगड़ के पिया करूं मैं, कुंडी सोटे आड़ा स्यूं. So in the, I mean, when we worship Lord Shiva, so this is a song, okay, which we sing. ठीक है. So वो कुंडी सोटे आड़ासु, कुंडी सोटा is nothing but mortar and pestle itself. ठीक है. So it's actually the 7 grades when it comes to tuberculosis of, हाँ जी, tuberculosis of कौन सा जॉइंट की टीबी है? ये टीबी ऑफ हिप. ठीक है. कहीं मैंने गलती से अगर नी और स्पाइन बोल दिया तो मुझे माफ कर देना. टीबी हिप है. ठीक है. ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप की हम लोग बात कर रहे थे. तो अब बात है कि इन्वेस्टिगेशन में आप क्या देखोगे जब भी आपको हिप देखना है. ठीक है. तो जब भी आपको हिप देखना है तो याद रखना, तो हिप में क्या आता है? HIP हिप. ठीक है. सो हिप को आप प्लीज याद रख लेना. MNOP उसका निमोनिक है. पी पे खत्म होकर के MNOP जो है इसका निमोनिक बन जाता है. तो क्या है MNOP में? सो रिमेंबर, M फॉर minimal periosteal reactions. M for minimal periosteal reactions. What is N? N for narrowing. किस चीज की narrowing? Joint space narrowing. तो मान लो ये joint है, ये joints और इसके बीच का जो space है वो narrow हो जाता है. So there is joint space narrowing that is going to happen, and minimal periosteal reactions are also going to be there. Okay. What is O? O for osteopenia, और P साथ में आएगा तो पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया, यानी कि जो भी आर्टिकुलेशन का सरफेस है उसके आसपास में बोन जो है वो खुरदरी यानी खराब होने लगती है. पेरी आर्टिकुलर ऑस्टियोपिनिया इज गोइंग टू अकर. Minimal periosteal reaction is going to occur. Joint space narrowing is going to occur, and then comes S and S. One is soft tissue shadow and other is subchondral cyst and erosions. Subchondral cyst and erosions, यानी कि जहां पर भी कार्टिलेज है, काले काले रंग का कार्टिलेज है, इसके नीचे क्या होगा? subchondral cyst and erosion is going to be there. There is going to be soft tissue shadow as well. ठीक है. तो ये आपका निमोनिक हो गया, MNOPS. फिर बात करते हैं अबाउट द मैनेजमेंट. तो देखो भाई, सीधी सी बात है, टीबी हुआ तो टीबी की दवा दे दी. ठीक है. दर्द दिल की दवा दीजिए, ऐसे दर्द टीबी की दवा दीजिए. तो टीबी की क्या दवाई होती है? HRZT. लेकिन अब ये एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीबी हुआ है, इसलिए थोड़ी एक्स्ट्रा महीनों के लिए दवाई देनी पड़ेगी. एक्स्ट्रा आर्टिकुलर टीबी के अंदर में हमेशा, सॉरी, एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी के अंदर में थोड़ी सी एक्स्ट्रा मंथली दवाई जो है आप लोगों को देनी बनती है. तो क्या मतलब है इसका? कि यहाँ पर हमारा जो कॉन्टिन्यूअस फेज होता है वो कितने टाइम का होता है? 9 से 10 महीने का होता है. अब जो भी बच्चे देख रहे हो, एक बार क्विकली टाइप करो जरा सा चैट सेक्शन में कि भाई कौन सी ऐसी चीज है HRZD में से जो हम 9 महीने नहीं देंगे. HRZD में से कौन सी ऐसी चीज है जो हम लोग लगातार 9 महीने नहीं देंगे. ठीक है. फटाफट बता दो.
अब इसी के साथ हम लोग ट्रैक्शन भी देते हैं। देखो अगर आपने पहला लेक्चर देखा था तो उसमें मैंने ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपको बताया कि व्हाई गिविंग ट्रैक्शन इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। नहीं भी अगर आप लोगों को पता तो भी मैं आपको बता देता हूँ। ट्रैक्शन, वन गुड वर्क, वन गुड टास्क ऑफ ट्रैक्शन इज टू रिलीव द स्पाज्म। एक तो ट्रैक्शन जो है सारी तरीके के स्पाज्म को, मरोड़े को रिलीव कर देता है। रेस्ट मिल जाता है क्योंकि खिंचा हुआ होता है सब, तो रेस्ट हो जाएगा, मतलब जो पेशेंट है वो इधर उधर भागेगा नहीं, ठीक है। इट प्रिवेंट्स द डिफॉर्मिटी, ठीक है, कोई भी डिफॉर्मिटी जो है वहां पे नहीं हो पाएगी, ठीक है। जैसे बचपन में हमारे, इन पर्टिकुलर मैं मेरी बात करूँ तो हमारे कान खींच के रखते थे ताकि बच्चा डिफॉर्म ना हो जाए, डिफॉर्मिटी, ठीक है। और जॉइंट स्पेस को भी जो है ना ये मेंटेन करके रखता है, ठीक है, नहीं तो क्या होगा, नैरोइंग हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब आप इसको इधर से खींचेंगे, ये इधर से खींचेगा, तो ऑफकोर्स जॉइंट स्पेस इज गोइंग टू गेट मेंटेन इटसेल्फ, ठीक है। अब देखो, वैसे तो इसको समझने के बहुत सारे तरीके हैं कि भाई एडक्शन में, एबडक्शन में ट्रैक्शन किस पे लगाना है। अब एडक्शन में अफेक्टेड लेग पे लगाना है, एबडक्शन के अंदर में वेल लेग पे, जो अच्छी लेग है उस पे लगाना है, तो है चीजें मुझे पता है। लेकिन अब ऐसा क्यों करते हैं क्यों नहीं करते वो आप लोग के स्कोप से बाहर है। तो आप लोग बस ये याद रख लो कि जहाँ ए डबल डी आ रहा है वहां ए डबल एफ आएगा, दैट्स इट। जहाँ ए डबल डी आ रहा है वहां ए डबल एफ आएगा, ए डबल डी आ रहा है ए डबल एफ आएगा, बात खत्म है, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करेंगे अबाउट दी ऑर्थोसिस। मतलब पहले हमने टीबी के लिए ड्रग्स दी, उसके बाद ट्रैक्शन दिया, ट्रैक्शन देने के बाद अगली चीज की बात कर रहे हैं, अगली चीज को हम लोग ऑर्थोसिस बोलते हैं, ठीक है। सॉरी, ये पता नहीं कैमरे का क्या प्रॉब्लम है, जब भी मैं पानी पीने लगता हूँ मेरे मुंह पे ऐसे जूम कर देता है कि देखो पानी पी रहे हैं। सो कमिंग ऑन टू ऑर्थोसिस, ठीक है। तो ऑर्थोसिस में क्या होता है बच्चे, ऑर्थोसिस यार जैसे आपने देखा होगा कुछ भी एक्सीडेंट एक्सीडेंट हो जाता है ना, तो वो गले का पट्टा बांध देते हैं। तो एक तो वो है जो एक गर्लफ्रेंड बांधती है बॉयफ्रेंड की, वो वाला नहीं, इसको हम लोग कॉलर ब्रेस बोलते हैं, ठीक है, जो गले पे बांध के रखते हैं, ऑर्थोसिस, ठीक है। तो ऑर्थोसिस का क्या फायदा है, इट प्रोटेक्ट्स, ठीक है, इसमें क्या होता है, इट प्रोटेक्टेड वेट बियरिंग, ठीक है, प्रोटेक्टेड वेट बियरिंग, प्रोटेक्टेड वेट बियरिंग, ठीक है। सो देयर विल बी व्हाट, देयर विल बी वेट बियरिंग, ऑफ कोर्स। देखो जब टीबी जो है हिप का ठीक होने लगेगा तो आप लोग वेट बियरिंग तो करवाओगे, बट इट शुड बी प्रोटेक्टेड, नहीं तो देयर आर स्टिल चांसेस ऑफ पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर। इसीलिए हम लोग ऑर्थोसिस डलवा के रखते हैं ताकि वेट बियरिंग तो हो बट वो कैसा हो, प्रोटेक्टेड रहे, ठीक है। इसी के साथ आपको जो अगली चीज याद रखनी है उसको आप लोग बोलते हैं कोल्ड एब्सेस। ऑफ कोर्स इफ देयर इज कोल्ड एब्सेस व्हिच इज पाल्पेबल, प्लीज डू द एस्पिरेशन, ठीक है, प्लीज डू द एस्पिरेशन इफ देयर इज कोल्ड एब्सेस व्हिच इज पाल्पेबल। तो ए से एब्सेस, ए से एस्पिरेट, नहीं तो पता ही आप लोगों को एस्पिरेट का। क्या हमारे पास में कोई सर्जिकल ऑप्शंस है? हाँ जी बिल्कुल, आपके पास में कोई क्या, बहुत सारे सर्जिकल ऑप्शंस हैं, और याद रखने के लिए निमोनिक है सेक्टर, ओके सेक्टर। तो सेक्टर क्या होता है, सेक्टर में एस से होता है साइनोवेक्टमी, ई से होता है एक्सिजन आर्थ्रोप्लास्टी, एस फोर होता है साइनोवेक्टमी, ई से होता है एक्सिजन आर्थ्रोप्लास्टी, सी से होता है करेक्टिव ऑस्टियोटमी, करेक्टिव ऑस्टियोटमी, एंड टी से होता है टीएचआर। फटाफट से कोई भी बच्चा बता दे कमेंट सेक्शन में व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ टीएचआर, ठीक है। सो साइनोवेक्टमी, एक्सिजन आर्थ्रोप्लास्टी, करेक्टिव ऑस्टियोटमी एंड टीएचआर। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अगली चीज की, दैट इज कॉल्ड एज साइनोवाइटिस। साइनोवाइटिस का ट्रीटमेंट क्या है? तो देखो साइनोवाइटिस में आप लोग ऑफ कोर्स एटीटी देंगे, रेस्ट देंगे, कुछ भी इंप्रूवमेंट नहीं होती, सो गो फॉर साइनोवेक्टोमी। सो एस फॉर साइनोवाइटिस एंड एस फॉर साइनोवेक्टोमी। अर्ली आर्थराइटिस में ऑफ कोर्स एटीटी रेस्ट चलता है, साइनोवेक्टोमी भी चलती है, तो आप देखो इन दोनों का सेम ट्रीटमेंट है। एडवांस आर्थराइटिस और सबलक्सेशन का भी ऑलमोस्ट सेम ट्रीटमेंट है, यू हैव टू गिव एटीटी, यू हैव टू परफॉर्म ट्रैक्शन, ओके। And then there is gross fibrous ankylosis, which is a very very important problem which is seen in this. So there is a gross fibrosis, इतना fibrosis हो जाता है कि दोनों के दोनों जो joint बनाने वाली bones हैं वो आपस में जुड़ने को हो जाती हैं, so that is called as ankylosis। Ankylosis means together, okay। So both the bones are going to fuse together, both the bones are going to come together, and to excise them, to excise them what we do girdle excision arthroplasty, ठीक है। हम लोग क्या करते हैं, we do girdle excision arthroplasty, girdle excision arthroplasty का हम लोग यूज करते हैं। Can we perform arthrodesis? Yes, of course we can perform arthrodesis if the child's age is 18 years, ठीक है। If the child age is 18 years, of course you can perform arthrodesis, ठीक है।
उसके बाद हम लोग बात करते हैं THR। व्हाट इज THR? टोटल हिप रिप्लेसमेंट। अब टोटल हिप रिप्लेसमेंट क्या हम कर सकते हैं या नहीं कर सकते? हाँ जी कर सकते हैं। ऐसा माना जाता है कि क्योंकि टोटल हिप रिप्लेसमेंट में 3 शब्द हैं, T है, H है, R है। अच्छी बात रहेगी यदि आप इसको 3 इयर्स के बाद करो, नहीं याद रहता तो भी आप याद कर सकते हो, THR सो THR मीन्स टोटल हिप रिप्लेसमेंट एंड 3 इज डबल ई। दैट मीन्स 1 से 3 साल ऑफ इंजरी ऑफ हीलिंग के बाद में आप लोग ये कर सकते हैं। इसी के साथ एंड होता है हमारा ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ हिप। ठीक है, इसी के साथ हमने क्या एंड कर लिया? ट्यूबरक्यूलोसिस ऑफ हिप। ठीक है, यदि आपके मन में कोई सवाल, कोई शंकाएं, कुछ डाउट कुछ भी है तो आप अभी पूछ लें, जिससे कि हम आपकी संपूर्ण रूप से सहायता कर पाएंगे। और उसके बाद में आप हम हमें नेक्स्ट जो है नेक्स्ट हम लोग टॉपिक के अंदर एंटर कर सकते हैं। बट यदि स्टिल आपको कुछ भी सवाल रहेंगे तो ये मैं बीच में ही लिख रहा हूँ मेरा ईमेल आईडी भी, और मैं बीच में ही आप लोगों को बता रहा हूँ मेरे यूट्यूब चैनल का नेम भी। ठीक है, माय यूट्यूब चैनल इज मेड्यूकेशन बाय डॉक्टर पर्व। ओके, तो यदि मान लीजिए आप यहाँ पर नहीं समझ पा रहे हैं कोई चीज, तो वहां आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। नहीं तो इस वीडियो के नीचे दिया गया कमेंट सेक्शन भी जो है आप लोगों के लिए हमेशा सदैव तत्पर है, ओपन है। यू कैन ऑफ कोर्स कमेंट। ठीक है, चलिए, मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सब समझ में आ गया और अब हमारी बारी आ गई है कि हम लोग ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन पढ़ें। तो स्पाइन, स्पाइन जिसको आप लोग हिंदी में बोलते हैं रीढ़ की हड्डी। ठीक है, रीढ़ की हड्डी। टीबी को क्या बोलते हो हिंदी में? इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इट इज कुष्ठ रोग। ठीक है, टीबी इज कुष्ठ रोग इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, तो अब जब कुष्ठ रोग, इंग्लिश पढ़ रहे हैं हम लोग। अब जब कुष्ठ रोग तुम्हारी रीढ़ की हड्डी के अंदर प्रवेश करता है, उसे कहा जाता है अंग्रेजी में ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन दुनिया में सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मस्कुलोस्केलेटल, व्हाट यू कॉल, मांसपेशी और हड्डियों के ढांचे में पाए जाने वाला सबसे ज्यादा कुष्ठ रोग रीढ़ की हड्डी में पाया जाता है। ठीक है, सो मोस्ट कॉमन मस्कुलोस्केलेटल ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्शन इज फाउंड इन द ट्यूबरकुलोसिस ऑफ स्पाइन। ओके, एंड इफ यू लर्न अ लिटिल बिट अबाउट माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, एक्चुअली आइडियली मुझे ये सब चीजें आप लोगों को पहले बता देनी चाहिए थी इन द इंट्रोडक्शन ऑफ ट्यूबरकुलोसिस इटसेल्फ, बट चलो कोई बात नहीं। I'll still try to tell you this, that most common. Okay, then Mycobacterium tuberculosis, just remember, it's an obligate aerobic bacteria. It's an obligate aerobic bacteria. It is of course Zn positive, acid fast bacilli positive. Acid fast होता है, bacilli होता है। ठीक है, it's a rod shaped bacteria, that's why called as bacilli। एंड आई डोंट नो, मुझे नहीं पता आप लोगों को ये पता है कि नहीं, बट स्टिल देर इज अ मेथड ऑफ, अगर ये जेडन स्टेन अवेलेबल नहीं होता तो मतलब देर इज अ मेथड, कोल्ड मेथड, इसको ठंडा मेथड बोलते हैं हम लोग, किन्योन स्टेनिंग, किन्योन स्टेनिंग। ओके, so that's also going to be positive in this. Also, how much percentage of Zn stain is used? So just remember, this is, sorry, how much percentage of H2SO4 is used as a decolorizer? We use this. Okay, so that's approximately 25%. ठीक है, 25% हम लोग decolorizer use करते हैं। Okay, this is non-motile, this is non-sporing. Also, if you know this is, there is a media which is called as triple N media, तो उसके अंदर में हम लोग tuberculosis को देखते हैं। Then there is a staging also, I just don't remember that staging, so because it's important for your microbiology viva purpose actually, and microbiology NEET also, so just check, एक होता है उसमें एक index होता है कि more than 50 bacterias per high power field and stuff। ठीक है, so I just request you to go through this because this is an entire domain of microbiology people and not mine, so I just don't remember it normally। कमिंग ऑन टू पैथोजेनेसिस, तो इससे पहले भी हम लोगों ने इसमें एक बार संक्षिप्त में गहराइयों में भी जाकर के बात कर ली है इस बारे में कि भाई देखो, द मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस इज गोइंग टू बी पल्मोनरी टीबी। ठीक है, सबसे ज्यादा पाए जाने वाला मोस्ट कॉमन ट्यूबरक्लोसिस इज पल्मोनरी टीबी। एंड इससे भी बाद में मुझे एक बात और याद आती है, दैट व्हाट इज द मोस्ट कॉमन स्केलेटल टीबी? इट्स नथिंग बट ट्यूबरक्लोसिस ऑफ स्पाइन। तो मोस्ट कॉमन स्केलेटल टीबी इज एक्चुअली टीबी स्पाइन। देखो भाई, एक चीज और भी मैं बता देता हूँ, मोस्ट कॉमन, ओके, मोस्ट कॉमन
extrapulmonary TB is musculoskeletal TB. Most common extrapulmonary TB is musculoskeletal TB. हिंदी में कहा जाए तो ये कहेंगे कि यदि फेफड़ों के बाहर कुष्ठ रोग ने दस्तक देनी है तो सबसे ज्यादा वो दस्तक मस्कुलोस्केलेटल यानी मांसपेशी और हड्डी के अंदर देता है। और हड्डियों में, मांसपेशियों में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली जगह होती है रीढ़ की हड्डी, और दूसरी सबसे ज्यादा जगह पाई जाने वाली होती है कूल्हे की हड्डी, दैट इज ट्यूबरकुलोसिस ऑफ हिप, ओके, हिप जॉइंट और समथिंग लाइक दैट। So now we will discuss in great detail about the pathogenesis. अब हम लोग pathogenesis को एक greater detail में हम लोग डिस्कस करेंगे, तो आपकी पूरी की पूरी अटेंशन जो है वो यहीं लगा देना, क्योंकि एक बार में अगर समझ में आ गया तो इससे फिर आगे की चीजें जो है क्लिनिकल फीचर्स एंड स्टफ जो है वो बहुत इजी बहुत ही इजी हो जाएगा। ठीक है, तो देखो हो क्या रहा है बच्चे, जब भी ट्यूबरकुलोसिस आता है, जब भी कुष्ठ रोग आता है, so it is going to go to your reticuloendothelial system। ठीक है, it is going to go where? It is going to go to the reticuloendothelial system। और जब भी वो reticuloendothelial system के अंदर में एंटर करेगा, just to let you know that it is responsible for inviting neutrophils। ठीक है, जब भी कुष्ठ रोग होगा, कुष्ठ रोग होने के बाद में there is going to be an invitation to what? There is going to be an invitation to the neutrophils। Neutrophils are going to come, when they will come, they are going to start phagocytosis, and remember there is going to be formation of epithelioid cell। Now what do you mean by epithelioid cell? Epithelioid is a cell which is going to have an abundant nucleus, okay, this is going to have what? This is going to have an abundant nucleus, this is also going to have a vesicular peripheral nucleus, vesicular peripheral nucleus, that is not peripheral, but you can remember vesicular nucleus is going to be there in the epithelioid cells, that causes fusion of epithelioid cell, and this fusion of epithelioid cell is going to occur in a U-shaped manner, and this is called as Langerhans cell giant cell, Langerhans cell or Langerhans giant cell formation। okay, तो देखो जब भी आप इसकी टीबी की स्लाइड लोगे, यू विल हैव these epithelioid cells, Langerhans giant cell मिलेगा ही मिलेगा, बहुत सारे आप लोगों को न्यूट्रोफिल्स भी मिलेंगे। ठीक है, ऑफ कोर्स, ठीक है, बहुत सारे क्या मिलने वाले हैं आप लोगों को, न्यूट्रोफिल्स भी जो है वो आप लोगों को मिलने वाले हैं। ठीक है, पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियर सेल्स, एंड अल्टीमेटली दिस लैंगरहैंस सेल जाइंट सेल, जिसको भी आप बोलते हो, एल से लैंगरहैंस सेल्स होता है, एस से लाइसिस होता है, so that causes lysis, I mean there is going to be lysis and digestion of epithelioid cell, and then after the lysis of epithelioid cell, ठीक है, जब भी लैंगरहैंस सेल्स जो है वो कट जाते हैं, फट जाते हैं, उसके बाद में कौन आता है? उसके बाद में लिम्फोसाइट्स आते हैं। सो एल से होता है लैंगरहैंस सेल्स, फिर ये लाइसिस होता है, और एक हफ्ते के बाद में आ जाते हैं लिम्फोसाइट्स, और लिम्फोसाइट्स आने के बाद में वो क्या करते हैं? वो करते हैं केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस, केशियस नेक्रोसिस। दैट मीन्स there is going to be accumulation of proteinaceous substances, there is going to be accumulation of proteinaceous substances after cell death। okay, proteinaceous substances after cell death। ठीक है, तो ये हमारा हो गया संक्षिप्त में, एक बार हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट द पैथोजेनेसिस। बट बात सिर्फ यही नहीं रुकती, ये तो हमने बता दिया कि टीबी जब आता है तो टीबी क्या करता है, लेकिन टीबी आता कैसे वो समझना भी बहुत जरूरी है। तो देखो टीबी कैसे आता है, दरअसल बॉडी में होता है एक प्राइमरी इन्फेक्शन। ठीक है, वो मोस्टली ऐसा देखा गया है कि लिम्फ नोड्स के अंदर में या हमारे फेफड़ों के अंदर में, ओके, आइदर इन द लंग्स और इन द लिम्फ नोड्स, यू विल फाइंड द प्राइमरी इन्फेक्शन दैट इज गोइंग टू एंटर टू द स्पाइन वाया द हेमाटोजेनस रूट। मैंने बोला प्राइमरी इन्फेक्शन से वो स्पाइनल टीबी कैसे होगा? वाया हेमाटोजेनस रूट, खून के जरिए, खून के रास्ते। ठीक है, मैं तेरा खून, ठीक है। So spinal TB can be of 4 types now. It can be paradiscal, it can be central, it can be anterior, it can be posterior। ठीक है, so paradiscal, anterior, posterior। So most common क्या होता है? Most common होता है paradiscal। ठीक है, किसी डिस्को में जाए, so most common is going to be paradiscal। Then of course it's going to be central, anterior and posterior। So paradiscal means ये एक डिस्क है, ये दूसरी डिस्क है, ये डिस्क और डिस्क के बीच में रिस्क है, ये डिस्क और डिस्क के बीच में रिस्क है, रिस्क है तो इश्क है, इश्क है तो बेटा रिस्क ही रिस्क है। बस याद करना, दो डिस्क के बीच में एक रिस्क है, और जो रिस्क है उसको डिस्क से इश्क है।
बड़ी बेवकूफ वाली बातें हो गई हैं, आगे चलते हैं। सो मोस्ट कॉमन इज गोइंग टू बी पैराडिस्कल, ठीक है। नाउ आता कौन है पैराडिस्कल लेके? या तो कोई आगे से आएगा या तो कोई पीछे से आएगा, आगे से आएगा पीछे से आएगा। Anterior spinal artery, posterior spinal artery. So anterior spinal artery, posterior spinal artery is going to bring the infection to the discal paradiscal area. Next is going to be central. अब central होता है center of the disc के अंदर में, कौन लेकर के आता है? अल्फाबेट्स के अंदर B और C एकदम साथ साथ आते हैं, साथ निभाना, ठीक है। So Bateson's venous plexus is going to be central. Okay, I mean Bateson's venous plexus is responsible for central TB. Anterior वही होगा जो आगे होगा, posterior वही होगा जो पीछे होगा, जो vertebral body और arc वगैरह में होता है, arches में होता है, ठीक है। थोड़ा सा क्लिनिकल फीचर्स, भाई सीधी सी बात है, कुष्ठ रोग है तो बुखार चढ़ना, रात में पसीने छूटना, वजन का कम होना, भूख ना लगना, थकान रहना, ये सब चीजें होना जायज है। यानी कि इफ यू आर हैविंग टीबी, ऑफ कोर्स द फीवर, द नाइट स्वेट्स, द वेट लॉस, द लॉस ऑफ एपेटाइट एंड मलेज आर गोइंग टू बी द कॉमन फीचर्स। देयर इज गोइंग टू बी नाइट क्राइज आल्सो, रात में रोना निकलना भी बहुत कॉमन है। व्हाई? बिकॉज जैसे मैंने पहले बताया था कि देयर इज गोइंग टू बी मसल स्पाज्म normally, but if you are sleeping, of course there is going to be muscle relaxation. And if there is a relaxation, okay, if there is a relaxation, this is going to permit the blood movements, and since the blood movements are happening, there is going to be the movement of spine between the inflamed surface. Okay, movement of spine between the inflamed surface नहीं क्या, हाँ मतलब spine भी move करती है, and of course the inflammatory cells are also going to move because now the muscles are relaxed. Okay, inflammatory cells also do move, ठीक है। जिसकी वजह से जब भी आप एग्जामिनेशन करेंगे यू विल हैव अ पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म, ठीक है। पैरास्पाइनल मसल स्पाज्म रहेगा, आपको दिखेगा। इसके अलावा यू विल हैव काइफोसिस। अब काइफोसिस जो होता है, काइफोसिस शुरू में ही मैंने बताया था, क से काइफोसिस होता है, क से होता है कुब्बा, क से काइफोसिस होता है, क से ही होता है, कुत्ता नहीं लिख रहा हूँ बेटा, कुब्बा लिख रहा हूँ। कुब्बा का मतलब होता है हंचबैक, हंचबैक। सो दिस हंचबैक कैन बी गिब्बस, कैन बी नकल। तो नकल मतलब होता है अगर आपका एक वर्टेब्रा इन्वॉल्व है तो हम लोग बोलते हैं नकल डिफॉर्मिटी है। एक वर्टेब्रा इन्वॉल्व है हम बोलते हैं नकल डिफॉर्मिटी है। और याद कर सकते हो, मेरी मम्मी बोलती थी नकल करके कितनी बार पास हो सकते हो? एक आध बार। सो यू कैन रिमेंबर लाइक दिस। Whereas gibbous is going to be what? 2 to 3 bones at least will be involved. Okay, gibbous will be involving 2 to 3 bones. Gibbous will be involving 2 to 3 bones, ठीक है। क्या यहाँ पे टेंडरनेस होगी? हाँ जी बिल्कुल, यहाँ पे टेंडरनेस होगी। यहाँ पर जो स्पाइनस प्रोसेस है उसके अलॉन्ग आप लोगों को टेंडरनेस भी जो है वो दिखेगी, ठीक है। उसके बाद हम लोग बात करते हैं अबाउट द स्वेलिंग साइनसेस। तो अब स्वेलिंग रहेगी, ऑफ कोर्स स्वेलिंग रहने ही वाली है, और यहाँ पर साइनसेस भी रहेंगे, ठीक है। किस तरीके के साइनसेस रहेंगे? सो देयर विल बी ड्रेनिंग साइनसेस, देयर विल बी व्हाट? देयर विल बी ड्रेनिंग साइनसेस दैट विल बी सीन, ओके। उसके बाद याद रखो कि ऑफ कोर्स द स्वेलिंग एंड द साइनसेस आर रिस्पांसिबल फॉर हैविंग व्हिच काइंड ऑफ एब्सेस? ऑफ कोर्स द कोल्ड एब्सेस। क्यों होती है कोल्ड एब्सेस? आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, सो देयर इज नो पॉइंट इन रिपीटिंग इट अगेन। भैया लाइट आई थी इसीलिए वो चार्जिंग का दोबारा से सिंबल आ गया था। अब हम बात करते हैं अबाउट द न्यूरोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। तो देखो भाई सीधी सी बात है, सिंपल सी बात है कि देयर इज माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, ठीक है। तो जो ये डिजीज है वो माइल्ड हो सकता है, वो मॉडरेट हो सकता है, सीवियर हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ आवाज में परेशानी आ रही है तो बता दो। सीवियर हो सकता है, ठीक है। अगर कुछ आवाज में नहीं आ रही है, ठीक है। सो माइल्ड है, मॉडरेट है, सीवियर है। सो माइल्ड इज समथिंग व्हेन द पेशेंट कैन वॉक विदाउट एनी काइंड ऑफ सपोर्ट। जब पेशेंट वॉक कर सकता है विदाउट सपोर्ट उसको हम लोग माइल्ड बोलते हैं, माइल्ड प्रॉब्लम बोलते हैं। मॉडरेट के अंदर में हमने देखा दैट देयर इज एक्सटेंसर मसल लॉस। एक्सटेंसर मसल्स जितनी भी होती हैं वो सब टूट जाती हैं, फूट जाती हैं, इसीलिए देयर इज गोइंग टू बी non-ambulatory patient, and of course we have seen that the sensory loss is also going to be there. Okay, so extensor muscle loss हो जाता है, sensory loss हो जाता है, non-ambulatory patient हो जाता है। severe में moderate वाली चीजें तो हैं ही हैं, साथ में there is flexor
चल ठीक है, तो हम लोग ने माइल्ड मॉडरेट सीवियर इसको अभी डिस्कस किया था, और वही मैं आपको बता रहा था दैट यस यू कैन वॉक विदाउट सपोर्ट इफ इट्स माइल्ड. Moderate, of course, extensor muscle loss, sensory loss, non-ambulatory patient, and in severe, it's going to be flexospasm, it's going to be sphincter loss as well. So, of course, in this also, the patient is going to be non-ambulatory patient. Okay, non-ambulatory patient is going to be there. Okay, right? Sure. So this is it. Now what next? Now we will discuss about the classification. Okay, now we will discuss about the classification of tuberculosis of spine. And in classification, this is called as what? This is called as your clinico-radiological classification. So classification is going to be clinico-radiological classification. Guys, I have the opportunity to welcome Dr. Tilak sir in the chat section, and thank you so much, Dr. Tilak, for such beautiful comments. And जिसको जरूरत नहीं है, I mean, Dr. Tilak has no need to watch orthopedics lecture. Still, he is watching, but you people are in utmost need, and you are postponing to watch it later on in the recorded section. चल, so clinical radiological classifications. तो इसमें क्या क्या होता है देखो, इसमें you have got some 4-5 things. Okay, so what I'll do, I will just write it over here. So one is going to be pre-destructive, then comes early destructive, really sorry, pre-destructive, early destructive. Okay, pre-destructive, early destructive, angular kyphosis, in which you have got, okay, next is angular kyphosis, in which you have mild angular kyphosis, moderate angular kyphosis, severe angular kyphosis. So just remember, these are the three most important things which you have to understand: pre-destructive, early destructive, and then angular kyphosis is going to be there. So what is important in pre-destructive? Remember, you have got the straightening of the curvature. So the curvature, to have curvature is actually a normal thing in the spine, but pre-destructive has got straightening of the curvature. So one is, there is straighten curvature. Okay, so one is going to be that there is a straightened curvature that is going to be there. After that, you have got spasm of paravertebral muscle. ठीक है, सो स्पैज्म ऑफ मसल्स, जो भी जितने भी वर्टिब्री के आसपास में मसल्स हैं, देयर इज गोइंग टू बी पैरावर्टिब्रल मसल स्पैज्म, दैट इज गोइंग टू बी देयर. देन आफ्टर दैट you have got radiolucency, end plate haziness, okay, and paraspinal soft tissue shadow. So there is going to be soft tissue shadow. Okay, paraspinal soft tissue shadow is going to be there. Okay, then X-ray is going to show you what? X-ray is going to show you radiolucency. Okay, radiolucency. X-ray is going to show you. X-ray is also going to show you soft tissue. Soft tissue. Okay. Yes, of course. Soft tissue shadow is going to be there. Then radiolucency is going to be there, and then end plate haziness. Okay, end plate haziness. Okay, end plate haziness. The only problem with this orthopedics now, whenever they give end plate, now I always read it as an under plate and I feel hungry. So end plate haziness is going to be there. Okay, and remember that investigation of choice. Remember this, that the investigation of choice is nothing but what? It is going to be MRI, and MRI is going to show marrow edema. Okay, MRI is going to show what? It is going to show edema of the bone marrow. That's going to show marrow edema. This is all about para-destructive, pre-destructive, sorry, not para, but pre-destructive. Okay, यानी अभी डिस्ट्रक्शन हुआ नहीं है प्रॉपर्ली, दिस इज प्री डिस्ट्रक्टिव कमिंग ऑन टू द अर्ली डिस्ट्रक्टिव नाउ. ठीक है, कमिंग ऑन टू व्हाट? दिस इज कमिंग ऑन टू अर्ली डिस्ट्रक्टिव. तो अर्ली डिस्ट्रक्टिव में क्या क्या देखने को मिलेगा? यू विल हैव डिमिनिश्ड डिस्क स्पेस. ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी व्हाट? देयर इज गोइंग टू बी डिमिनिश्ड
डिस्क स्पेस, एक तो जो डिस्क स्पेस है वो ही कम हो जाएगा, डिमिनिश्ड डिस्क स्पेस. Then there is pre-discal erosion. Okay, so diminished disc space, pre-discal erosion is going to be there. Okay, then marrow is going to show you what? Marrow is going to show you marrow edema. MRI is going to show marrow edema and break in the osseous margins. ठीक है, फिर हम लोग इसमें MRI करेंगे तो क्या दिखेगा? There is going to be marrow edema. ठीक है, एक तो बोन मैरो जो है वो स्वेल्ड अप, अरे ऑफ कोर्स स्वेल्ड अप होगा ही ना, क्यों? क्योंकि देखो ब्लड वेसल्स कहाँ जाने वाली है? बोन मैरो के अंदर ही तो जाने वाली है. वहां इन्फेक्शन होगा तो मैरो एडेमा हो जाएगा. और ब्रेक इन ऑशियस मार्जिन्स. ठीक है, ऑशियस मार्जिन्स मतलब क्या? जो भी बोन के मार्जिन्स है वहां पर ब्रेक होने लग जाएगा. ब्रेक इन ऑशियस मार्जिन्स आर ऑल्सो गोइंग टू बी देयर. ठीक है, CT scans are also going to show the same thing as MRI, that is your break in osseous margins, and they are also going to show you one more thing, that is कैविटेशंस. ठीक है, और क्या दिखने वाला सिटी में? कैविटेशंस दिखेंगे. ठीक है, उसके बाद आप लोग को क्या याद रखना है? दैट माइल्ड, एंगुलर, मॉडरेट एंड दिस. तो रिमेंबर व्हाट इज गोइंग टू हैपन, तीनों के अंदर ही देयर विल बी मोर देन 3 वर्टिब्रीज आर गोइंग टू बी इन्वॉल्व्ड. ओके, माइल्ड, मॉडरेट एंड सीवियर, you will have one more than 3 vertebrae will be involved in all the three. Take in all the three. Okay, so just remember that angle of kyphosis. Okay, so just अभी के लिए इतना याद रख लो, जिसको हम लोग K से डिनोट करते हैं, angle of kyphosis. Okay, there is going to be like in mild it's going to be 10 to 30 degree, in moderate it is going to be approximately 30 to 60 degree, और यहाँ पर तो कर्वेचर बिल्कुल ही खत्म होने पे आ जाएगा. So it will be more than equal to 60 degrees, more than equal to 60 degrees. ठीक है, so just remember severe में तो more than equal to 60 degree हो जाएगा. ठीक है, so आप लोग को बस उतना ही जो है याद रखना है. और कि K होता क्या है? K is the angle of kyphosis. ठीक है, K is the angle of kyphosis. For example, these are the vertebral bodies. ठीक है, for example these are the vertebral bodies. तो इस तरीके से आप लोग जो है इसको एंगल को मेजर करते हो, जिसको हम लोग एंगल ऑफ काइफोसिस बोलते हैं. ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज व्हाट? दिस इज कॉल्ड एज एंगल ऑफ काइफोसिस. ठीक है, एंगल ऑफ काइफोसिस. दैट्स इट. ओके, मोर देन सफिशिएंट फॉर दिस एंगल ऑफ काइफोसिस. ओके, सो ये तो हमने क्लिनिको रेडियोलॉजिकल कर लिया, और MRI की भी चीजें मैंने आपको थोड़ी बहुत बताई हैं. ऑफ कोर्स तीनों में मोर देन 3 वर्टिब्रेज विल बी इन्वॉल्व्ड. ऑफ कोर्स तीनों में यू विल हैव इन्वॉल्वमेंट ऑफ, ठीक है, मोर देन 3 वर्टिब्रेज विल बी इन्वॉल्व्ड, एंड यस ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी इन्वॉल्वमेंट ऑफ vertebral body, and that is why there is collapsed vertebra. ठीक है, there is going to be involvement of vertebral body and there will be collapse of vertebra. ठीक है, vertebral collapse भी जो है आप लोगों को दिखेगा. ठीक है, so other thing is MRI. अगली चीज अगर हम लोग डिस्कस करते हैं वो MRI है. तो जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, इट इज इन्वेस्टिगेशन ऑफ चॉइस. MRI is responsible for the early detection as well. ओके, अर्ली डिटेक्शन के लिए हम लोग हमेशा MRI यूज करते हैं. वन ऑफ माय फ्रेंड वाज हैविंग दिस tuberculosis of spine and MRI showed it. And what does MRI going to show? MRI is going to show you of course the inflammation. ठीक है, अर्ली फीचर्स में MRI में इन्फ्लेमेशन दिखेगी. एंड इन्फ्लेमेशन के अंदर में जस्ट रिमेंबर दैट T11 इज ऑफ कोर्स समथिंग व्हिच इज लेस, सो इट इज गोइंग टू शो यू हाइपो इंटेंस. ठीक है ना, तो बस ऐसे याद करने के लिए बता रहा हूँ कि 1 जो होता है वो छोटा नंबर होता है तो हाइपो, और 2 जो होता है वो बड़ा नंबर होता है, सो इट इज गोइंग टू बी हाइपर इंटेंस व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी व्हाट? देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लेमेशन. ओके, व्हेनेवर देयर इज गोइंग टू बी इन्फ्लेमेशन. So one of course is going to be inflammation, and another thing which you have to remember is there is going to be reduced disc height. Reduced disc height. So why the disc height is going to be reduced? Because of course understand that the for example this is the vertebrae and this is the end plates. End plates are affected, so this is not going to grow. And if it's not going to grow properly, this is going to be what? Reduced disc height is going to be there. Reduced disc height is going to be there due to weakened end plates. Okay. All right. Then what else? There will be paravertebral abscess also. So after this inflammation, you can remember paravertebral abscess.
Okay, paravertebral abscess is going to be there. Okay, okay. Now there is going to be, if you do contrast studies, sometimes we do contrast studies, like gadolinium scan if we do. Okay, so this gadolinium scan is something that is going to show you the thickened end plates. Remember, it is going to show you what? That's going to show you thickened end plates, thick end plates. Okay, that's going to show you what? That's going to show you very thick end plates that will be seen. Okay, and why it is there? Because of the abscess. ठीक है भाई, अब यहाँ क्या है? abscess है, इसलिए आपको दिखेगा. ठीक है. अब मान लो एंड प्लेट ना होकर के पूरे वर्टिब्रल बॉडी ही तुम्हें थिक दिख रही है, तो पूरी वर्टिब्रल बॉडी ही तुम्हें थिक दिख रही है, तो ये क्या है? इसको तुम ग्रैनुलेशन टिश्यू बोलते हो. ठीक है, इसको क्या बोलते हो भाई? इसको ग्रैनुलेशन टिश्यू के नाम से तुम लोग जाना जाता है ये. ठीक है, ओके. हाँ, ठीक है. अब कॉर्ड में भी कुछ होता है क्या? स्पाइनल कॉर्ड में ऑफ कोर्स पूरा का पूरा जो स्पाइनल कॉर्ड है वो भी इन्फ्लेम हो जाएगा. ठीक है, इसको आप लोग क्या बोलते हो? तो इसको हम लोग बोलते हैं माइलोमलेशिया. ओके, माइलोमलेशिया, दैट्स अगेन इम्पोर्टेंट. ओके, एंड याद रखना मैरो का एडेमा एंड प्लेट इरोजन जो है वो कॉमन फाइंडिंग है. बस खाली इतना एक चीज और नोट कर लो, दैट देयर इज गोइंग टू बी सब लिगामेंटल स्प्रेड ऑल्सो इफ इट इज देयर. सब लिगामेंटल मतलब लिगामेंट के नीचे, इतने मुझे लगता है तुम लोग समझदार हो. सब लिगामेंटल स्प्रेड इज गोइंग टू बी देयर, और अगर वो होगा तो वो कहाँ दिख जाएगा? एमआरआई के अंदर में ये दिख जाएगा. तो जो भी 4-5 बच्चे हम लोगों को देख रहे हैं, मैं चाहता हूँ बेटा प्लीज आप मुझे एक चीज बताओ, एक चीज बताओ, फटाफट से बता देना, दैट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराप्लेजिया. ठीक है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ पैराप्लेजिया? ठीक है, पैराप्लेजिया का क्या मतलब होता है आप बताएंगे? ठीक है, जस्ट वेटिंग फॉर योर रिप्लाईज. व्हाट डू यू मीन बाय पैराप्लेजिया? ओके, एंड कैन देयर बी पैराप्लेजिया और नॉट? पैराप्लेजिया हो सकता है कि नहीं? सो ऑफ कोर्स देखो, अभी हम एक बार एक छोटा सा टॉपिक हम लोग यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, पैराप्लेजिया इन नवीन जी कह रहे हैं लोअर बॉडी पैरालिसिस. हाँ बच्चे, यू आर ऑलमोस्ट राइट. ठीक है, पैराप्लेजिया इज ऑफ कोर्स लोअर बॉडी पैरालिसिस. ओके, एंड नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ पैराप्लेजिया. देखा गया है ये ग्रुप्स के अंदर में पैराप्लेजिया होता है, ग्रुप ए एंड ग्रुप बी. टेक्स्ट कर दो, मैसेज कर दो. ठीक है, so there's going to be group A and group B. Okay, there's going to be group A and there's going to be group B paraplegia that is going to be there if it is a case of tuberculosis. तो ग्रुप ए के अंदर में क्या देखा गया है बच्चे? ये अर्ली ऑनसेट होता है. ठीक है, और ग्रुप बी जो होता है वो लेट ऑनसेट होता है, यानी 2 साल के बाद वाला. ओके, तो बेसिकली दोनों में ही नर्व्स इन्वॉल्व है तभी ये हो रहा है. ठीक है, सो ग्रुप ए हम लोग तब बोलते हैं अगर टीबी स्पाइन का जो पैराप्लेजिया है वो अर्ली सेट इन हो जाता है. अर्ली मतलब विद इन फर्स्ट 2 years. ओके, विद इन first 2 years of TB spine, and of course group B is going to be later means after 2 years. ठीक है, after 2 years. अब आप लोग खुद इतने समझदार हो बच्चों कि आप लोग देखो, अब ये मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, ये आप लोगों को सिर्फ एग्जाम लिखने में काम नहीं आने वाला है, ये आप लोगों को लाइफ लॉन्ग भी काम आएगा, क्योंकि आपको पता है स्पाइन खराब होती है तो पैराप्लेजिया होने ही वाला है. बट यू हैव टू अंडरस्टैंड कि भाई देखो, अगर ये पहले 2 हफ्तों में हो, पहले 2 सालों में हो रहा है ना, तो इट्स अ फेवरेबल प्रोग्नोसिस. ओके, इट्स अ फेवरेबल प्रोग्नोसिस. ठीक है, क्यों हो रहा है ये? किस लिए हो रहा है ये? दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ, फॉर एग्जाम्पल, टीबी एब्सेस की वजह से हो रहा है. ओके, व्हाई इट इज हैपनिंग? बिकॉज ऑफ ट्यूबरकुलोसिस ऑफ एब्सेस की वजह से हो रहा है, ग्रैनुलेशन टिश्यू की वजह से हो रहा है, या फिर हम कहें कि ये एक केशियस नेक्रोसिस की वजह से जो है वो हो रहा है. ठीक है, जायज सी बात है, होना भी चाहिए, और क्योंकि ये हो रहा है तो फिर ऑफ कोर्स ये फेवरेबल प्रोग्नोसिस है. बट अगर हम देखें आफ्टर 2 years होने वाला पैराप्लेजिया, इट्स गोइंग टू हैव एन अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस. ठीक है, दैट्स गोइंग टू हैव व्हाट? इट्स गोइंग टू हैव एन अनफेवरेबल प्रोग्नोसिस. एंड सिंस द प्रोग्नोसिस इज अनफेवरेबल, देखो बेटा सीधी सी बात है, बहुत सिंपल सी चीज है, इट इज हैपनिंग व्हाई? बिकॉज देयर इज अ सिक्वेस्ट्रा फॉर्मेशन. और जिसको सिक्वेस्ट्रा नहीं पता है, अगर पता है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख दो व्हाट इज सिक्वेस्ट्रा. नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ, हमने ये ऑलरेडी ऑस्टियोमाइलाइटिस में डिस्कस किया है. फटाफट बता दो व्हाट इज सिक्वेस्ट्रा.
So just remember sequestra, it's going to be there. Of course, there is going to be stenosis of the vertebral column, stenosis of the cord, stenosis of the fibers going here. Why? Because of internal gibbus. Stenosis because of internal gibbus. What is internal gibbus? So मैंने आपको बताया था, it's a kyphosis which is happening because of involvement of two or more than two bones, that is there. So what is sequestra? किसी ने नहीं बताया, मैं आपको बता देता हूँ. Sequestra is a dead necrotic, okay, dead necrotic part of bone. Okay, dead and necrotic part of bone separated from the normal healthy bone. Okay, separated from normal healthy bone. ओके, चलिए. तो इसके बाद में बच्चे हम लोग ये सारी चीजें मैंने आप लोगों को बता दी हैं. अब एक बार हम लोग बात कर लेते हैं कि व्हाट अबाउट द, ओके, पैराप्लेजिया की हम लोग ने अगर बात की है तो मैंने आपको कुछ कॉजेस भी बता दिए हैं. ठीक है, टीबी, एब्सेस एंड ऑल दीस थिंग्स, दीस आई हैव ऑफ कोर्स टोल्ड यू, सो देयर इज नथिंग मच टू वरी अबाउट इट. ठीक है, एक चीज मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि देयर इज समथिंग व्हिच इज called as spinal tumor syndrome. I know that spinal tumor syndrome is not given in Maheshwari. It's not really important also. या देखो, महेश्वरी पर्सनली आई लाइक, ऐसी बात नहीं है कि दैट्स नॉट अ गुड बुक, इट्स अ गुड बुक. बट मैंने देखा है कि आप महेश्वरी में इतना सारा पढ़ोगे और उसमें से फिर आपको 2 लाइन मिलेगी काम की. तो मैं बहुत सारी आगे की किताबें पढ़ के भी आप लोगों को जो अच्छी चीजें हैं वही छांट छांट के दे रहा हूँ. इट्स अ गुड आइडिया टू अटेंड दीज क्लासेस लाइव इटसेल्फ. ठीक है. सो व्हाट इज स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम? ये कहीं नहीं मिलेगा आपको यूजी में, बट इफ यू राइट दिस इन योर एग्जाम, ऑफ कोर्स डिस्टिंक्शन आपको जरूर मिल जाएगी. सो व्हाट इज स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम? इट्स अ डिफ्यूज एक्स्ट्राड्यूरल ग्रैनुलोमा. इट्स अ डिफ्यूज एक्स्ट्राड्यूरल ग्रैनुलोमा. मतलब ये ड्यूरा को इन्वॉल्व नहीं कर रहा. इट्स अ डिफ्यूज एक्स्ट्राड्यूरल ग्रैनुलोमा और पेरिड्यूरल, दैट मींस अराउंड द ड्यूरा, फाइब्रोसिस. ठीक है, फाइब्रोसिस या ग्रैनुलोमा हो जाता है, दैट इज कॉल्ड एज स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम. स्पाइनल ट्यूमर सिंड्रोम. ठीक है, चलो, गुड. नवीन बेटा, अगर आप ये देख रहे हो, अभी भी ये क्लास लाइव देख रहे हो, तो मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा, that which is the gold standard test for detection of tuberculosis? Okay, gold standard test for detection of tuberculosis, and side by side I will start writing the investigations of tuberculosis of hip. Okay, investigations of tuberculosis of hip हम लोग बात करेंगे. तो of course भाई सीधी सी बात है, very simple thing, that you have got PCR. Okay, PCR, or you can remember CBNAT. Okay, CBNAT, PCR, this is something which we do, of course. Okay, so we have to do this. Okay, and just remember that it is very sensitive. It is very, so why have you are doing this? Because of course it is very sensitive, it is very specific. Then just remember that it can differentiate between tuberculosis versus non-tuberculosis causes. Okay, then I mean non-tuberculosis, tuberculous mycobacteria causes. Okay, then it is very efficient to detect your XDR, MDR, TB. Okay, MDR, TB, XDR, TB. So this is again important. जो भी 3-4 बच्चे देख रहे हैं, यदि आप XDR, TB मुझे बताना चाहें तो I'll be very happy in the comment section. ठीक है, so these all things are really important. Then we can of course do TB MGIT. So what is TB MGIT? But before that, okay, TB MGIT. Now what is MGIT? Mycobacterium growth indicator tube. Okay, Mycobacterium growth indicator tube is going to be the full form of TBMGIT. ठीक है, TBMGIT. So हाँ जी, यहाँ तक आप लोगों को आई फील समझ में आ गया होगा. नाउ कमिंग ऑन टू द मैनेजमेंट पार्ट. ठीक है, सो नाउ कमिंग ऑन टू द मैनेजमेंट पार्ट. Investigations, of course, other investigations like you know the, और क्या क्या लिख सकते हो आप? जेडन स्टेन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप? एक्रिडन ऑरेंज लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो आप? किनियन स्टेन लिख सकते हो, और क्या लिख सकते हो? ट्रिपल एन मीडिया लिख सकते हो. ट्रिपल एन मीडिया इज गोइंग टू शो यू व्हाट? इज गोइंग टू शो रफ, buff, tough colonies.
रफ, बफ, टफ, कॉलोनीज लिख सकते हो। सो ये सारी चीजें जो है बच्चे ये इंपॉर्टेंट है। सो आफ्टर इन्वेस्टिगेशंस द नेक्स्ट थिंग इज गोइंग टू बी दी मैनेजमेंट। ठीक है, इन्वेस्टिगेशंस के बाद नेक्स्ट क्या लिखेंगे हम लोग? We'll talk a little about the management part. Just remember, when comes to the management part, you have got an uncomplicated spinal TB. Just remember this. This uncomplicated spinal TB is a disease. So uncomplicated, if it is there, then you have to give nothing but the medical therapy, and medical therapy you very well know. This is HRZE therapy that is going to be there, uncomplicated. So if the patient is on, this HRZD therapy, so what you have to do, you have to check the clinico radiological improvement after 3 months. So just look for clinical radiological improvements after 3 months. If there is this improvement is happening, then of course continue the HRZD. Okay, and then we have to check for clinico hematological. Okay, clinico hematological improvement, if it is there or not. So if it's a clinico hematological improvement is there, then of course after 12 months we have to see. Okay, then of course we can stop HRZD. Okay, and MRI is advised to be done at 6 months. ठीक है, MRI is advised to be done at 6 months. तो ये सारी चीजें जो है हम लोगों को देखनी होती है। ठीक है, दिस इज समथिंग विच यू हैव टू check for. And there is a regimen which is called as path regimen. So what does path regimen tell? So of course path regimen tells the the patient to rest, to continue the HRZE treatment for like 2 months, for 6 months, sorry, it's 2 months, 9 months. Okay, intensive phase, continuous phase, all these things you have to perform. They also ask you to perform ESR. They also ask you to perform X-ray at an interval of 3 months. Why at an interval of 3 months? Because it's a good idea to check for the improvement, because the SR is an inflammatory marker. MRI, CT, of course, it is also to be done. MRI and CT scan has to be done. भाई मैंने जैसे आपको बताया 6 months के अंतराल पे, it's always a good idea to be done. Okay, इसको आपको करना ही चाहिए. You should always give spinal braces. Spinal braces उसकी controlled movement करवाएंगे, लेकिन movement करवाना जरूरी है. If there is abscess, of course, aspiration is good. Okay, abscess है तो aspiration, and 1 gram of streptomycin is also given. So 1 gram of streptomycin is given, and yes, of course, you can give what? You can do the aspiration also. Okay, aspiration also. So do we require surgery? As per path, yes, you have to do surgery. Okay, so surgical management, and this is the surgical management of port spine. This has been asked as a very important question also, surgical management of port spine. ठीक है, I can see 5-6 students in the class. बच्चों फटाफट बताओ what is the difference between POTS fracture and POTS spine. ठीक है, जल्दी जल्दी से बताओ POTS fracture और POTS spine का क्या difference होता है. Okay, so now we'll talk about the surgical management of POTS spine. ठीक है, तो पहली बात तो ये जो तू टिकटॉक टिकटॉक चलती है, टिकटॉक टिकटॉक चलती है. चलो बच्चे, सबसे पहले इंडिकेशन. ठीक है, सो इंडिकेशंस की हम लोग बात करेंगे, और इंडिकेशंस में हम लोग बात करेंगे अबाउट द वेरी फर्स्ट थिंग, एंड द वेरी फर्स्ट थिंग इज कॉल्ड एज इंडिकेशंस इन पेशेंट विदाउट न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट. ठीक है, अगर न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है तो, ठीक है, न्यूरोलॉजिकल डिफेक्ट नहीं है, न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट इज एब्सेंट, देन व्हाट आर यू गोइंग टू डू? न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है तो क्या करेंगे? ठीक है, सुनसान रात अब ऐसी रात रख दिल पे हाथ. ठीक है, तो न्यूरोलॉजिकल डेफिसिट नहीं है तो क्या करेंगे? तो देखो, तब हम सर्जरी करेंगे अगर देयर इज फेलियर ऑफ इम्प्रूवमेंट. ठीक है, मान लीजिए कि बिल्कुल भी जो पेशेंट है वो इम्प्रूव ही नहीं कर रहा है, फेलियर ऑफ इम्प्रूवमेंट. ओके, if there is no patient compliance, like irregular chemotherapy.
ठीक है, अगर पेशेंट जो है कीमोथेरेपी के लिए नहीं आ रहा है, इरेगुलर है, सो इरेगुलर कीमोथेरेपी देन वी हैव टू डू। ओके, देन समटाइम्स टू प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी, प्रिवेंट द डिफॉर्मिटी तब भी हम लोगों को करना होता है। ठीक है, सो फॉर एग्जांपल इफ child is having kyphosis of for example more than 30 degrees before starting of treatment, ठीक है, तो फिर आप उन केसेस में हम लोगों को सर्जरी करनी ही पड़ती है। ठीक है, हम लोगों को सर्जरी इस केसेस में जो है करनी ही पड़ती है, वी डोंट हैव एनी अनदर ऑप्शन इन दैट केस। ठीक है, और यदि मान लो कि पैराप्लेजिया हो ही गया, अगर पैराप्लेजिया हो ही गया है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, सर्जरी करेंगे अगर वो पैराप्लेजिया इफ इट इज गेटिंग वर्सन, ठीक है, अगर ये वर्सन होता जा रहा है, ओके, और कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर पावर, चला ही नहीं जा रहा है, कंप्लीट लॉस ऑफ मोटर पावर फॉर लाइक 1 month, ओके, देन if there is a flexure paraplegia, if there is sensory loss, and if there is a cauda equine syndrome, cauda equine syndrome or cauda equina syndrome, whatever you call it as, cauda equine syndrome or cauda equina syndrome, ठीक है, so this you have to understand, ठीक है, so now you will perform surgery. Now what do you do in surgery? Okay, what do you do in surgery? So in surgery you have to do the decompression, ठीक है, एक तो आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूरल decompression. Okay, so how will you do neural decompression? Of course, drain the abscess, remove necrotic tissue, granulation tissue. Okay, necrotic tissue हटा देंगे, granulation tissue हटा देंगे, ठीक है, ये सारी चीजें जो आप लोग हटा देंगे, ठीक है, यू रिमूव दी सिक्वेस्ट्रा, ओके, ये सब चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है, दैट इज कॉल्ड एज न्यूरल डिकम्प्रेशन। ओके, देन यू हैव टू परफॉर्म compression, not compression, you have to do the osteotomy, corrective, not osteotomy, what you say, क्या बोलूं, करेक्शन ऑफ डिफॉर्मिटी, डिफॉर्मिटी का करेक्शन करना है आपने, ठीक है, वो पता होना चाहिए, और करते क्या है हम लोग, so you put the screws in adjacent vertebra, okay, you and distract them, so distraction of screws placed between the two vertebra, so placed between the two vertebra you are going to distraction of the screws placed between the two vertebra, you have to do this, okay, and yeah, so after this what you have to do, anterior chamber, because anterior chamber is also at stake, so anterior chamber reconstruction. How will you do the anterior chamber reconstruction, the damaged anterior chamber reconstruction? By using the grafts, okay, so by using the various grafts you are going to do anterior chamber reconstruction, okay, the different type of grafts you are going to use, okay, तो वो हम लगाएंगे, जैसे कि autografts, for example from fibula, from your iliac crest, ठीक है, so from the fibula you can get, from the iliac crest of course you can get, ठीक है, and put the grafts over there, okay, so this is again important. Then spine stabilization, next important thing, spine stabilization is again important during the surgery itself, spine stabilization. Okay, so spine stabilization is going to give you what? It's going to give you pain relief. Okay, that's going to promote the neurological recovery also. Promote neurological recovery as well. It is going to give you pain relief also. So all these things are going to come into
play when it comes to what? When it comes to surgical applications. Like what exactly are you going to do in surgery? Okay. So just remember, some time ago they asked like what is the position to enter, like surgical approach. Okay, how will you approach the vertebra? So surgical approaches can be posterior, can be posterolateral. Okay, it can be posterior, it can be posterolateral. Okay, so posterior is good. Why? Because it is best, because there is minimal vertebral damage. Minimal vertebral damage is going to occur. That is why it is considered to be a very good surgery. Okay, right. So it is done if there is a mild kyphosis. Okay, it is done. But problem is that it is done in patients with माइल्ड काइफोसिस. थोड़ा ही काइफोसिस होना चाहिए, ज्यादा काइफोसिस जो है वो नहीं होना चाहिए, अदरवाइज पेशेंट इज नॉट गोइंग टू be good. I mean, patient is not eligible for posterior correction. Okay. After that, you have got posterolateral. Okay, this is also good one. Okay, so why it is also good one? Because in this there is going to be simultaneously you can do the anterior reconstruction. It is good because you can do simultaneous anterior reconstruction. What about anterior then? Can't you approach it anteriorly? So the answer is yes, of course you can approach anteriorly also. Okay, there is no problem. Okay, because and anterior is also good one. Okay, like it is also better one. Why it is better? Because in this case decompression is well managed. Okay, decompression is best in this. ठीक है, so decompression is going to be best. ठीक है, ये सबसे अच्छे से decompress हो जाता है, so it's actually good. Okay, um right, तो ये आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, so the last but not the least, if you have uh, antitubercular drugs, I think you very well know what are the ADRs and all these things. So this is actually our next topic, so I will make this as a separate heading now. Let's understand about the next part. This is anti-tubercular drugs. I know not very important as per your orthopedics point of view, but yeah, anti-tubercular drugs are important, and we will discuss it one by one. So what is important? First of all, HRZD, H is there. What is H? H is called as isoniazid. And what is the ADR in this? So ADR is going to be hepatitis. That you have to remember. Hepatitis is going to occur. Of course, CNS toxicity is going to be there. Hepatitis is going to be there. Peripheral neuropathy. Okay, neuropathy is also going to occur. So this is H. After H, you have the other drugs. HR for your rifampicin. What is there in rifampicin? So remember, rifampicin is going to have red colored urine. Okay, and of course some ocular problems as well. Okay, not specific to this, so just we can remember red color urine, and hepatitis is also there in this. Then Z is going to be there. What about Z now? So Z is very famous, that is pyrazinamide for hepatotoxicity as well as hyperuricemia. Okay, pyrazinamide, hyperuricemia, and hepatotoxic. What about E? E for your ethambutol. Ethambutol is going to have what? It is going to have color blindness. Again, important. Okay. So these are really very, very important drugs. So you have to remember this. So these all, whatever I have written, these are the first line agents. And the dose, if you want to learn, remember 5, 10, 15, and 30 mg per kg is the dose. Okay. So 5, 10, 15, and 30 mg per kg is the dose. And after that, just remember second line drugs.
injectable fluoroquinolones and other drugs. So second line, if we talk about second line drugs, can be divided into two parts. One is going to be injectable, then the others are, I mean, next comes the fluoroquinolones and some other drugs as well. So, Hanji, what about the fluoroquinolones? I mean, injectable drugs. So you have got streptomycin, which is streptomycin, amikacin. So these are what? These are, हाँ जी, कौन सा ग्रुप है इसका फटाफट बताओ, जो भी दो तीन बच्चे देख रहे हैं, कौन सा ग्रुप है? Are these aminoglycosides or macrolides or what? And they have got ototoxicity, nephrotoxicity, neurotoxicity. Okay, जल्दी से बताओ, which group of drugs do they belong to? And then comes to fluoroquinolones. So fluoroquinolones, you have got ofloxacin, levofloxacin, like that. Okay, ofloxacin, levofloxacin. Okay, moxie, getty, ofloxacin, levofloxacin, moxifloxacin, gettifloxacin. All these are again important. And remember that they have got QT prolongation, they have got टेंडन रप्चर. बेटा ये एक लाइन इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है ना, हर ऑल्टरनेट साल आती है नीट के एग्जाम में, तो खास करके टेंडन रप्चर. तो टेंडन रप्चर, क्यूटी प्रोलॉन्गेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, देन अदर ड्रग्स, इथियोनामाइड. सो दिस इज इथैम्ब्यूटॉल, ध्यान से समझना है, बहुत बार पूछते हैं. दिस इज इथैम्ब्यूटॉल, दिस इज इथियोनामाइड. ठीक है, दिस इज इथियोनामाइड, दिस इज अ सेकेंड लाइन ड्रग. तो फर्स्ट लाइन सेकेंड लाइन में ही कंफ्यूज नहीं होना. इथैम्ब्यूटॉल, इथोनामाइड आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, देन इथियोनामाइड, देन साइक्लोसिरीन. ओके, साइक्लोसिरीन. हाँ जी, देन पैरा अमाइनो सैलिसिलिक एसिड, पैरा अमाइनो salicylic acid, then linezolid, then amoxiclav. Okay, these are another important things. So amoxiclav आपको सबको पता है, आप सबने ली होगी, that it is very famous for causing diarrhea. linezolid, मीने भी तर बढ़ जाएगी तेरी solid बड़ी रहे, हाँ, इस तरीके का गाना है ना. तो linezolid solid, तो सॉलिड इतना कि सबको सप्रेस कर देता है. किसको सप्रेस कर देता है? माइलो सप्रेशन, बोन मैरो सप्रेशन करने के लिए बहुत फेमस है. पास, ठीक है. प्लीज डोंट कम नियर टू मी, आई एम सुपर सेंसिटिव. पास इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कॉजिंग हाइपर सेंसिटिविटी. मेरे पास मत आओ, मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगी, क्योंकि मैं हाइपर सेंसिटिविटी कॉज करती हूँ. ठीक है. साइक्लोसिरीन, ठीक है, साइक्लोसिरीन का प्रॉब्लम क्या है? सी से साइक्लोसिरीन, डी से डिप्रेशन, डी से डिप्रेशन. ठीक है. अच्छा, इसके अलावा कुछ न्यू ड्रग्स हैं, एक दो के नाम मैं आपको बता देता हूँ. व्हाट आर द न्यू ड्रग्स? You have got bedaquiline, delamanid. Bedaquiline and delamanid. Okay. So what is important in this? देखो, bedaquiline याद रखो, responsible for causing QT prolongation. QT, देखो bedaquiline has got this Q, so QT prolongation. And what about delamanid? So delamanid, just remember, causing dizziness. D से delamanid causes dizziness. ठीक, तो ये सारे हो गए आपका एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर दिया. ठीक है, एक छोटी छोटी चीजें हैं कुछ, अगर आप बता देते तो बहुत अच्छा होता, नहीं तो मेरे को बताना पड़ रहा है. व्हाट इज MDR-TB, व्हाट इज XDR-TB? ठीक, व्हाट इज, हाँ, so what is MDR? If you have got H and R resistance, so resistance to H, isoniazid acid, R is rifampicin. XDR means H resistance, R resistance, and of course any fluoroquinolone resistance, and at least one of the injectable drugs is resistant, then you call it as XDR-TB. Then you call it as XDR-TB. So this is MDR-TB, XDR-TB. Why don't you start similar for medicine and surgery? चलो यहाँ तक समझ में आ गया. बायोलॉजी इन योर मेमोरी. बेटा सिमिलर फॉर मेडिसिन एंड सर्जरी करेंगे बच्चे स्टार्ट. एक बार ऑर्थो खत्म हो जाए, उसके बाद देखते हैं क्या स्टार्ट कर सकते हैं. सर्जरी आई फील वी कैन स्टार्ट. मेडिसिन आल्सो वी कैन स्टार्ट, सर्जरी आल्सो वी कैन स्टार्ट. लेट्स सी व्हाट वी कैन स्टार्ट. ठीक है, करते हैं कोशिश बेटा. इसके बाद हम लोग नेक्स्ट बात करेंगे. 21 बैच एग्जाम इन मार्च करेंगे बच्चे, स्टार्ट करेंगे. एक बार ऑर्थो खत्म हो जाने दो, देन वी विल
see what else we can start. Of course, we will finish ortho by 17th. We will finish it up. 17th नहीं, by 18th we will finish it up. And उसके बाद 2-3 दिन और हैं, then I will see what good I can do for you. ठीक है, चलो, तो ये हम लोगों ने डिस्कस कर लिया अबाउट द ट्यूबरकुलोसिस. अब हम लोग नेक्स्ट चीज के बारे में डिस्कस करेंगे, दैट इज टॉर्टिकोलिस. ठीक है, अगला टॉपिक है हमारा बच्चे टॉर्टिकोलिस. लास्ट में पढ़ेंगे, टीबी नी के बारे में सबसे लास्ट में पढ़ेंगे. ठीक है, टॉर्टिकोलिस हम लोग डिस्कस करते हैं. ओके, चलो, सो नेक्स्ट टॉपिक इज गोइंग टू बी टॉर्टिकोलिस. टाइम हो गया है 6:27. वी विल टेक अ ब्रेक टिल 6:40 एंड मीट एट 6:40 देन. ठीक है, 6:40 पे हम लोग फिर मिलते हैं. ओके, चल.
All right, guys. So audio, video, everything is fine. Let's start with the torticollis now. So torticollis, before we begin, I want to discuss some of the images with you guys because these images are really important and some case-based discussions as well. So see here, you have got a 9-year-old child presents with a sharp angular deformity in the thoracic spine. So there is an angular deformity in the thoracic spine. So there is some spinal deformity which is going to be there. Okay. Then you have got back pain, low grade fever. So there's fever, difficulty walking. Okay. There's a history of weight loss also, night sweats also. That means it has got a tuberculosis as well. So it's TB spine. On examination, a prominent hump is seen that we call it as hunchback. That means which is the deformity? So the answer is gibbous deformity. It's a Pott's disease, that is spinal tuberculosis. I also asked my dear students what is Pott's fracture. It is the fracture of ankle. Okay, it's the fracture of ankle joint. Okay, so so these are again important things. So you should know this. Coming on to TB, next question: limping gait is there, pain in groin area is there, restricted movement is there, hip is held in flexion, abduction, and external rotation. That means it is the synovitis stage of tuberculosis of hip joint. There's history of chronic fever as well as weight loss also. Okay, so these two topics we have discussed, and these two things I have discussed with you in detail also. Okay, coming on to the X-rays also. Now this is the gibbous deformity. This is the angle, kappa angle. Okay, this is the angle, kappa angle, again important, and this is the, yeah, this is the angle in between. Okay, so this is TB spine, TB knee I have told you, sorry, TB hip I have told you. This is wry neck. Can you see? This is wry neck. When you have got the deformity there where there is tilting of head towards one side and rotation towards opposite side. So tilted is here, rotation is here, tilt is here. Okay, and okay, so it is tilted on one side and rotation on the other side. Okay, so just remember this definition: when the head is tilted towards one side, tilted towards one side, एक side के ऊपर में tilt होगा, and there is going to be rotation on the other side. Okay, and there is going to be rotation on other side. Okay, so there is going to be tilt on one side and there is going to be rotation on other side. Okay, so this is the definition of torticollis. So let me just give you this definition. Just give me 1 second. This is the definition. हाँ जी, चलो. So this is the definition of torticollis, that head is tilted towards one side and rotated on the other side. After definition, let's understand about the classification of torticollis. So classification, so torticollis can be divided or can be classified on two bases. One is on the basis of onset and the other is on the basis of symptoms. Okay, so one is on the basis of onset and other is on the basis of symptom. Okay, so on the basis of onset, please remember it is congenital or acquired. Okay. On the basis of onset, either it is either congenital or it is acquired. Either it is congenital or it is acquired. On the basis of symptoms, it can be painful or painless. Okay, it can be painful torticollis, it can be painless torticollis. Painful torticollis and painless torticollis. Okay, now congenital painless, acquired painful. Okay, so congenital painless. So we have seen that the congenital one is always painless. So let's discuss about them one by one. So first one, that is congenital as well as painless. So we have seen that most of the times the one which is congenital is generally painless. The one which is congenital is generally painless. Okay, then just 1 second. हाँ जी.
So it is painless. So please understand, why does it happen? It happens because of congenital muscular torticollis. Congenital muscular torticollis. So what happens? We have seen that the sternocleidomastoid muscle, if it is inflamed, okay, if it is inflamed generally, or if it is, it is damaged or some deformities there. So the most common cause of congenital or painless torticollis is going to be what? It is going to be, or congenital painless torticollis is going to be your muscle torticollis, muscular torticollis. That's the most common cause. Muscular torticollis, it's going to be there. Of course, vertebral abnormalities can also be there in this. Now, what are the different vertebral abnormalities? Klippel-Field syndrome. Remember Klippel-Field syndrome. Okay, Klippel-Field syndrome or Klippel-Field syndrome, that we call it as. Then we have got occipitalization of C1, which is very commonly seen. Occipitalization of C1, that is very commonly seen in the case of Down's syndrome. So in Down syndrome, we have seen occipitalization of C1 as well. Occipitalization of C1. Then you have got congenital hemiatlas. Okay, if there is a congenital hemiatlas, then that's another cause of the same problem. Then you have got ocular torticollis. Okay, in order to see properly, sometimes the head is tilted, seen in the cases of squint. Okay, so ocular torticollis is again another issue which is going to be there. Now, acquired cause is generally, we have seen, this is our uh, experience, that acquired torticollis is generally painful. Now, what are the different causes of acquired painful torticollis? One is going to be traumatic. Okay, one is going to be what? That's going to be traumatic. And what will you see in traumatic? You have got C1 fracture. Okay, C1 fracture is there. Then atlantoaxial Atlantoaxial displacement. Atlantoaxial displacement is going to be there. Then you have got inflammatory. Okay, then there is inflammatory. Now, which type of inflammation is going to be there? So either you have got juvenile rheumatoid arthritis, or osteomyelitis, infective osteomyelitis. Then what else? Then there can be tumor also. Okay, tumor also. So these are again important. Now, what else are others? Other like this, you can have acquired painless as well. Okay, you can have acquired, that can be painless as well. Okay, acquired painless. Now, what will you see in acquired painless? You have got, in acquired and painless, you have got your torticollis of infancy. Paroxysmal torticollis of infancy. One, it is going to be there. Okay. Then CNS tumors like acoustic neuroma. Acoustic neuroma can also cause this. Okay, so again, these things are also common. Then it is associated with the Down syndrome as well. So of course, all these things I'm going to teach you in detail. Okay, but just remember these things as of now. Okay, so this was about the classification and some causes I've discussed. But if they ask you about the risk factors, so just remember that it has been observed that oligohydramnios is one of the very important cause. Oligohydramnios is one of the very important cause when it comes to what? When it comes to your torticollis. Okay. Hanji. After that, you have got primi gravida. Okay, so primi gravida is again responsible for causing what? I mean, it's again a risk factor for torticollis. Okay, right? So this is again important. After that, you have got next thing, that is your Hanji, breech delivery, traumatic delivery. Okay. So traumatic delivery is going to be there, breech delivery is going to be there. Okay. So all these things are really important. Breech delivery, traumatic delivery. Um, Thank you so much, Dr. Tilak, and thank you. Really thankful to you.
and just keep your blessings with us, wishes with us, and of course we'll try and excel together. Thank you. Then after that, please understand, beta, you have got something which is called as packaging disorders. Okay, there are some packaging disorders also. देखो properly यदि पैक नहीं होगा तो सीधी सी बात है इधर उधर मुड़ना तो है ही है, ठीक है. So packaging disorders as well, जैसे for example developmental dysplasias. Okay, developmental dysplasias. So development dysplasia of hip जो होता है ना, that we have seen that it is many a times associated with your torticollis as well. Torticollis as well. बेटा एक चीज देखो याद रखो, इफ देर इज इंट्रा यूट्राइन, याद रखो यदि यूट्रस के अंदर इंट्रा यूट्राइन यदि माल पोजिशंस हैं, ठीक है, माल पोजिशंस हैं, होता है ना ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑक्सीपिटो, so all these things malpositions है, तो इससे होगा क्या, that causes venous outflow tract obstruction. ठीक है, venous outflow जो है ना बच्चे वो obstruct हो जाती है, और अगर वो obstruct हो जाती है that is responsible for causing the edema, and then that is going to cause arterial obstruction. And if there is arterial obstruction बेटा तो एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, that is called as your compartment syndrome. ठीक है, और ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम के अंदर में क्या हो जाएगा, कंपार्टमेंट सिंड्रोम में फिर देयर इज गोइंग टू बी इश्कीमिया, ठीक है, एंड नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस. ओके, इश्कीमिया एंड नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस, ठीक है, इश्कीमिया एंड नेक्रोसिस एंड फाइब्रोसिस ऑफ द मसल. और अगर ये सब हो रहा है मसल के साथ में, सो व्हाट इज इट, इट इज नथिंग एल्स बट योर, हाँ जी ये कुछ नहीं है पर क्या है, योर टॉर्टिकॉलिस. टॉर्टिकॉलिस, ठीक है. कमिंग ऑन टू द क्लिनिकल फीचर्स. अब क्लिनिकल फीचर्स में क्या दिखेगा बच्चे, तो देखो जनरली हमने ये देखा है that male to female ratio in torticollis is going to be 3:2. Okay, 3:2. And then head is tilted towards affected side. ये लाइन बहुत जरूरी है, ये याद रख लेना, because this has been asked in your exam also. Head is tilted towards the affected side. ठीक है, head is tilted towards the affected side. ठीक है, तो हेड कहाँ पर टिल्ट होता है, अफेक्टेड साइड पे ये जो है टिल्ट हो जाता है हेड. ठीक है, तो ये आप जो पिक्चर देख रहे हो इसमें आप मुझे बताओगे कि इज इट अ राइट साइड टॉर्टिकॉलिस और इज इट अ लेफ्ट साइड टॉर्टिकॉलिस. नाउ दिस इज योर क्वेश्चन. इसमें मुझे बताओ इफ इट इज अ राइट साइड टॉर्टिकॉलिस और इट इज अ लेफ्ट साइड. हेड किस तरफ टिल्ट हुआ हुआ है, चिन, हेड, हेड, चिन कहाँ पर टिल्ट हुआ हुआ है, और ये किस तरीके किस साइड का टॉर्टिकॉलिस है. दिस इज समथिंग विच यू हैव टू टेल मी. ठीक है, टॉर्टिकॉलिस. चलो उसके बाद में हम लोग डिस्कस करते हैं बेटा नेक्स्ट चीज के बारे में. हेड टिल्टेड टुवर्ड्स द अफेक्टेड साइड, ये इसका क्लिनिकल फीचर है बच्चे. एंड चिन इज रोटेटेड अवे. ओके, चिन इज रोटेटेड अवे. ठीक है, तो वही जैसे मैंने आपको बताया कि अभी बच्चे का हेड इस साइड था, सो दिस साइड इज अफेक्टेड साइड. दिस साइड इज व्हाट, दिस साइड इज अफेक्टेड साइड. क्योंकि आप देखो if I want to look on this side, and so which side of sternocleidomastoid, this is there, so if it is gone, of course my head is going to be like this, my chin is rotated oppositely. Okay, so chin is rotated away. Okay, chin is rotated where, it is rotated away. Okay, then there is either a painless or a painful motion. Okay, pain can be present, pain can be absent as well. Then you have got some neck masses, so there is going to be palpable neck mass. Okay, there is going to be palpable neck mass is going to be there, palpable neck mass is going to be there. Okay, palpable neck mass. And then you should understand that in older children we have seen that there is facial asymmetry also. Okay, in older children we have seen that there is facial asymmetry also which is associated with this. Okay, then there is scoliosis, fixed scoliosis, lateral bending of spine, fixed scoliosis that has also been seen in these patients. Then of course there is going to be diplopia also because of the squint. Okay, so these are the things which are very common. Okay, which are very commonly seen. Then we have to do some of the other investigations. So what are the investigations you will carry out? In investigations you will do ultrasound, and in ultrasound you will have hypoechoic margins or hypoechoic fibrotic lesions. Hypoechoic fibrotic lesions are going to be there. Sternocleidomastoid muscle will show you hypoechoic hypoechoic what I should say, hypoechoic, हाँ जी क्या दिखेगा आपको बच्चों, hypoechoic fibrotic lesions will be there. Okay, then x-ray, हाँ जी x-ray,
So X-ray is performed to see any bony abnormalities, okay? Then MRI has to be performed, okay, to check for any central cause if it is there, okay, any brain neurological cause if it is there, then we have to perform the MRI brain, and then CT scan is also done, okay, to be extra sure. Then we have got the treatment part. So what is the treatment you will do? So remember, if I ask for the treatment, so conservative treatment is something that we do, and generally performed in children less than 1 year, and you won't believe that 95% of the cases are going to have good prognosis with the conservative treatment only. ठीक है, conservative treatment से ही जो है ना काम चल जाता है. So what do you mean by conservative treatment? You will do passive stretching, okay. You will ठीक है, the passive stretching is going to be there gently by the parents themselves. Passive stretching is going to be there, okay. And then the स्ट्रेटेजिक प्लेसिंग मीन्स आप क्या करेंगे कि टॉय को दूसरी साइड रखेंगे ताकि जो चाइल्ड है वो अपना मुंह टेढ़ा करे टॉय को देखने के लिए, ओके. सम ऑर्थोटिक्स ऑफ कोर्स we can use, okay. Traction is also something that is given, okay. Traction is also given, okay. So in alphabets, O and P come together, S and T come together, so this can be used as a subtle mnemonic also, okay. So ऑपरेशन इज इट नेसेसरी टू डू, क्योंकि हर माँ बाप पूछेगा ही पूछेगा कि इसका ऑपरेशन कराना जरूरी है. So we have to remember certain indications like when the operation is necessary and when the operation is not necessary. So for example, if the conservative treatment is going to fail, okay, if the conservative treatment is going to fail, in that case, it is a very good idea to perform surgery, okay. If there is progression, if there is recurrence, okay, in these cases also we have to perform this operation. And when it comes to operation, what will you do? So either you can do tenotomy, okay. What to do, okay, टेनोटमी कर सकते हो आप, okay. Tenotomy, that means tendon repair, tenotomy, okay. Then we have got something called as release of sternocleidomastoid muscle, release of sternocleidomastoid. Sometimes if it is small, then we have to do Z lengthening of sternocleidomastoid muscle. Z lengthening of sternocleidomastoid muscle is something which you have to do, okay. And then please don't forget to give a post operative torticollis brace, okay. Post-operative torticollis brace is something which we have to give to these patients, okay. Give to these patients, right? So these are the important things which you have to keep in mind, okay. Coming on to the next part, which is that is called as spina bifida. This is our second last topic, spina bifida. Let's start the topic. And for those of you who don't know, today is a very special day, okay. हाँ जी, बताइए why today is a very special day. चलो ये तो बता दो जल्दी से. कोई जवाब नहीं देगा, है ना. स्वामी विवेकानंद जयंती is there today, okay. So happy Swami Vivekanand Jayanti to every one of you, okay. So स्वामी विवेकानंद जी का एक बहुत ही फेमस कोट है, जिसका मुझे एग्जैक्ट कोट तो नहीं याद, बट यार समथिंग व्हिच आई नो इज दैट ही सेज कि उठो जागो और तब तक संघर्ष करो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है. सो जस्ट पुट इन योर हार्ट एंड सोल, जब तक कि आपका जो भी मेरे हिसाब से मुझे कहना चाहिए, जो भी आपका लक्ष्य है आप उसको प्राप्त ना करो तब तक आपको मेहनत करनी है, ठीक है. कमिंग ऑन टू स्पाइना बाइफिडा, so let me just tell you a little in
इंट्रोडक्शन अबाउट स्पाइना बाइफिडा. सो क्या है इंट्रोडक्शन ऑफ स्पाइना बाइफिडा? याद रखेंगे बच्चे दैट यू हैव गॉट समथिंग विच इज कॉल्ड एज माइलोडिस्प्लेशिया. ठीक है, एक टर्म होती है जिसको हम लोग माइलोडिस्प्लेशिया बोलते हैं. ठीक है, माइलोडिस्प्लेशिया. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय माइलोडिस्प्लेशिया? सी, माइलोडिस्प्लेशिया इज अ कॉमन ग्रुप ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स. ओके, इट्स अ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स का एक ग्रुप है. ठीक है, वेरियस क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटी. इट्स अ ग्रुप ऑफ कॉन्जेनाइटल डिसऑर्डर्स caused by various chromosomal abnormalities that causes failure of closure. Okay, that leads to failure of closure of fetal spinal cord, fetal spinal cord, and presence with anatomical abnormalities, presence with anatomical abnormalities and neurological impairment of varying degrees. ठीक है, तो ये चीज जो है बच्चे बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ माइलोडिस्प्लेशिया. ओके, सो माइलोडिस्प्लेशिया इज नथिंग बट a group of congenital disorders which is caused by various chromosomal abnormalities, and then you have to understand it leads to failure of closure of fetal spinal cord, which prevents the presence with the anatomical abnormalities with the neurological impairment of varying degrees. ठीक है, this is the introduction. Now let me just discuss about the etiology. So you know very well that I have told you that देखो होता तो किस वजह से, this is entirely happening because of what? Because of some of the other problems of, हाँ जी, किस लिए हो रहा है बच्चे? This is happening because we have got some or the other issues with what? हाँ जी, किस वजह से आ रहे हैं ये सब issues हमें? ये सब issues आ रहे हैं because we have got a problem in, हाँ जी बताओ किस वजह से आ रहे हैं ये? Because of chromosomal problems. ठीक है, so chromosomal abnormalities which is the most common one. So what are the different chromosomal abnormalities? वही अपनी 3, 13, 18, 21. ठीक है, so these are the trisomies 23, 18 and 21. These trisomies are associated with this. Now we have seen that the very important risk factor that must be mentioned in them is your folate deficiency. Okay, folic acid deficiency or folate deficiency is going to be there. Then you have got maternal diabetes mellitus, maternal consumption of valproic acid. Okay, so these are the things which are responsible for causing the spina bifida. Now what is the pathophysiology? After etiology, let's understand about the pathophysiology. So what is common in pathophysiology? देखो बेटा, पैथोफिजियोलॉजी की अगर मैं बात करूं आपसे, सो वी हैव सीन दैट देयर इज लोकल फेलियर ऑफ प्राइमोर्डिया ऑफ टू लेमिने to unite the uh, to unite, and of course there's going to be vertebral canal that will be open dorsally. Okay, so there is nothing but failure of closure of primordia of two leaves. Okay, of two lamina. Okay, so there is two lamina, and two lamina are going to failure of closure is going to be there. Okay, so you have got different types. Okay, on this basis you have got different types, and what are the names of these types? So types can be spina bifida. Okay, can be spina bifida, occulta, then spina bifida can present in the form of meningocele or meningomyelocele. Meningocele, meningomyelocele. Okay, so just remember
spina bifida occulta. What does this mean? Spina bifida occulta means that there is a defect in the vertebral arch with confined cord and meninges within the skin. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल ये वर्टिब्रल कॉलम है, ठीक है, और ये आपके ऊपर अंडरलाइंग स्किन है. सो ऑफ कोर्स देयर इज गोइंग टू बी गैप. ठीक है, यहाँ गैप तो रहेगा ही रहेगा. ठीक है, जिसकी वजह से, ठीक है, यहाँ पर गैप तो रहेगा ही रहेगा. ओके, बट एक चीज आपको जो याद रखनी है कि ये जो गैप है इसमें, ठीक है, ये यहाँ पर सपोज करो आपकी ये स्पाइनल नर्व जो है वो आ रही है, देयर इज गोइंग टू बी अ गैप. ठीक है, देयर इज गोइंग टू बी अ गैप, बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड, गैप इज गोइंग टू बी देयर. ठीक है, ये स्पाइनल नर्व्स आ रही हैं और यहाँ पर हम लोग ये, हाँ ये गैप है. ठीक है, सो दिस इज द स्किन, दिस इज द ब्लू वाला इज द कैनाल, अंदर नर्व्स आ रही हैं. ठीक है, सो देयर इज अ गैप इन द कैनाल. ठीक है, तो सिंपल भाषा में यस, गैप इन द कैनाल इज गोइंग टू बी देयर, बट रिमेंबर दैट द नर्व्स एंड द meninges are going to be inside the skin. So nerves and meninges are going to be where? Nerves and meninges are going to be इनसाइड द स्किन. ठीक है, वो स्किन के अंदर ही रहने वाली हैं, इनसाइड द स्किन. ठीक है, इनसाइड द स्किन. सो नर्व्स एंड meninges are going to be where? They are going to be inside the skin if it is the case of spina bifida occulta. But what about meningocele? So in meningocele they are going to protrude. ध्यान रखना. तो ये बाकी की सारी चीजें meningocele, mylomeningocele, and there is something which is called as rachis. ठीक है, रैकी यहाँ लिखते हैं, रेकिस्काइसिस. इन तीनों को मिलाकर के आप बोलते हो स्पाइना बाइफिडा एपोल्टा. ठीक है, स्पाइना बाइफिडा, ये स्पाइना बाइफिडा ओकल्टा होता है, इसको आप बोलते हो स्पाइना बाइफिडा एपोल्टा. ठीक है, जो जो आपको दिख जाएगा, स्किन के बाहर आता हुआ दिख जाएगा. सो देयर विल बी मेनिंगोमाइलोसील में प्रोट्रूडिंग सैक विदाउट द न्यूरल involvement. So this meninges are going to protrude, but there is going to be no nerves, no neural element that is going to come out. Whereas meningomyelocele, they will have this nerves also and sac also. And what is rachis? Neural elements are exposed with no covering. Just remember, rachis will have exposed neural elements. ठीक है, लेकिन क्या नहीं होगी? नो कवरिंग. ओके, नो कवरिंग इज गोइंग टू बी देयर इन दिस केस. ठीक है, तो ये था अबाउट द टाइप्स. नाउ वी विल, नाउ प्लीज अंडरस्टैंड दैट अगर, बिकॉज सीधी सी बात है दैट डिफरेंट abnormalities are going to have different problem. Okay, different abnormalities are going to have different problems. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेवल कौन सा है जहां पर प्रोट्रूजन है, जहां पर ऑक्लूजन है, तो वो आप लोगों को पता होना चाहिए. सो लेट मी जस्ट मेक अ स्मॉल टेबल फॉर यू एंड राइट द important things. For example, if L3 is involved, okay, for example, if you know L2 is involved, then the patient is going to be non-ambulatory. The patient is going to be non-ambulatory. तो देखो L2 है, 2 है तो दो वर्ड्स इन्वॉल्व है, एक नॉन वर्ड इन्वॉल्व है, एक एम्बुलेटरी इन्वॉल्व है. L3 है, so देखो the problem is that the primary function motion is the hip flexion, hip adduction, वो जो है वो नहीं हो पाएगा. So there is hip flexion is gone and adduction is gone. Flexion is gone, adduction is gone. Okay, adduction and this is gone. Okay, then ओके, सो ये सारी चीजें हैं जो आप लोगों को पता होना चाहिए. ठीक है, देन यू हैव गॉट L4 दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नी एक्सटेंशन. ओके, L4 इज फॉर व्हाट? दैट इज फॉर नी एक्सटेंशन. तो नी की जो है वो एक्सटेंशन नहीं हो पाएगी, यानी एम्बुलेटरी प्रॉब्लम्स जो है वो आएंगी इन सब चीजों में. ठीक है, देन यू हैव गॉट द L5 is responsible for what? L5 is responsible for hip extension, for hip abduction. ठीक है, hip extension is gone, hip abduction is gone. So ये सब चीजें आने वाली हैं. ठीक है, now in S1 to S4, ambulatory services are going to be normal. Okay, the patient is going to be ambulatory in all these things, but of course the other things are going to be involved. Like for example, the S3 and S4, your urinary problems are going to be there. Okay, urinary problems are going to be there, urinary functions are going to be damaged. Okay, that S1 is foot plantar, S2 is toe plantar. Okay, S1 is foot plantar problem.
Okay, foot plantar flexion is gone. Then S2 is toe plantar flexion is gone. Okay, so these are the things which you have to understand, that where is the gap. Yes, there are some of the other associated orthopedics problems as well. So now I will write down those problems, that is associated uh, orthopedic conditions, and of course the treatment as well. Associated orthopedic conditions and treatment. Okay, so for example, there is first one. Let's understand the first one, that is pathological fractures. Okay, because there is a pathology, of course, pathological fractures are going to be there. Okay, so just remember that there is going to be osteopenia also. So there are chances of long bone fractures also. Okay, so uh, just remember that in these patients we tend to give short course. Okay, there is going to be short course or short period of immobilization. Okay, short period of immobilization is something that is taken care in a well padded splint. Okay, in splint we just prefer see the chances of pathological fractures are too much, so just avoid any kind of aggressive movements. Then of course scoliosis is something that is also seen in these patients, that is lateral bending. So what to do in these cases? So just remember that bracing effective? No, bracing is not effective, because if you do bracing, of course the nerve elements, the neural elements are going to be involved. Okay, neural elements are going to be involved. Now, but the treatment is very important, because if you'll not treat the scoliosis, remember the muscle imbalance is going to be there. Okay, because of course some nerves are getting entrapped. Okay, there is because baby is small, some vertebrae might not grow properly. There can be hemivertebral formation as well. So what we have to do, so somehow uh, we correct that scoliosis. That's altogether a separate thing, but just remember that we have to take care of scoliosis as well. Okay, scoliosis is also it's something that we have to take care of. At least decompression and stuff, we have to do that. Okay, then other complications, so other complications can be congenital kyphosis also. Okay, congenital kyphosis is also associated with this. Okay, congenital kyphosis is also associated with this. Then some dislocations are also associated with these conditions. One is the very common one, the hip dislocations, and the other is called as knee dislocation. So hip dislocation is there, knee dislocation is there. Then 90% of the time we have seen that there is CTEV. That's again an important topic. We'll discuss mostly tomorrow. Okay, congenital talipes equinovarus. Okay, mostly tomorrow we will discuss this. Okay, CTEV. So again, these are the foot deformities which we have to take care of. Okay, so till yeah, we do the next part, next topic we discuss. Let me just ask you, what is the treatment of spina bifida? Okay, so let me know about what is the treatment of spina bifida. In fact, for all. Okay, so I'm asking you, what is the treatment of spina bifida? Okay. Hmm. Yes, one student is writing, sir, for prevention we can give. Yes, for prevention, of course, we can give folic acid. That's good. Okay. Yes, what else? Folic acid you can give. Hanji. Yes, what more? और क्या करोगे? Okay, then I'll leave this upon you. Yes, of course, surgical correction is something that we have to do for spina bifida. Of course, we can do surgical corrections also. ठीक है जी. Anything else? Any good thing else if you can suggest?
Okay then. So coming on to the last important part of our discussion, last important part, that is tuberculosis of hip. But before we go on to that, let me just take you guys to the yet another important part, that is your TB. So, oh, sorry, the question. So, see, newborn is found to have a swelling in the lower back region with exposed neural tissue. So, if the neural tissues are also exposed, this is rachis. Okay, rachis. Okay, exposed neural tissue. Although they have given myelomeningocele, no. Okay, this is not. But see, it cannot be rachis also, because there is a swelling also. No, no, it can be. It can be. Okay, so it can be rachis. Okay, so baby has got weakness in the lower limbs. Yes. Difficulty in passing urine. Yes. Most probable diagnosis, Spina bifida, rachis. Then Rhineac torticollis, 2-month-old infant, presents with the head tilted to one side and chin rotated to the opposite side. Firm swelling is felt in the sternocleidomastoid muscle. Most probable diagnosis, congenital muscular torticollis, that is also called as Rhineac. Okay. So this also we have discussed, and TB knee, of course, I'll tell you, but let us do a retrospective learning in TB knee. Just remember, child will have a chronic swelling of the knee. Of course, there is going to be joint is warm. So this is this should not be warm actually, but they are just trying to tell you that there is a slight inflammation which has occurred. Okay, but generally in TB we see the cold abscesses and no inflammation. Okay, so movements are painful, restricted. There is associated with muscle wasting of the thigh. Okay, so there is tuberculosis of the knee joint. So this I have told you. Let me just take you through these things also. So can you just see there is an inflammation? Inflammation you can see in the TB knee. Okay, there's going to be inflammation, and here you can see a swelled part. This is nothing but spina bifida, or you can remember that this is the myelencephaly. Okay, myelencephaly, that's going to be there. Okay, so let me just take you to the last part, that is TB knee. Okay, TB knee, and in TB knee, the very important part is the TB arthritis stage of the knee. Okay, TB arthritis stage of the knee. Oh my God, I have written myelencephaly. It's myelodysplasia. Sorry, I got a little confused. This is not myelencephaly. This is myelodysplasia. Okay, dysplasia, you can at least say this. Okay, myelodysplasia on the basis of your x-ray, of course you can see this. So coming on to the tuberculosis of the knee joint. Okay, चलिए. चलो बच्चे, अब we will discuss about the TB knee, and just give me 1 second. हाँ. So TB knee, of course, the very important thing which you have to understand in TB knee is the clinical feature. I mean, the what I should say, the introduction part. Yes, you very well know that extra articular tuberculosis, most common extra articular tuberculosis is tuberculosis of musculoskeletal joint. Okay, musculoskeletal system. Okay,
Then you have got an etiology. So I hope that the etiology of TB you are well versed with now. Mycobacterium tuberculosis, and इसका गुणगान गाना हो तो these are obligate aerobes, acid fast bacilli. Zn is the stain, quinion stain, ठीक है, rough buff tough colonies that are seen in NNN media. Then you have got CBIT, okay, MGIT, Mycobacterium growth indicator tube. Then you have CBNAT as the investigation. So all these things are going to be there when we will have the Mycobacterium tuberculosis with us. Okay. Then the next thing which you have to understand is the pathogenesis, which I have told you in detail, in great depth, we have already discussed. Okay, pathogenesis. So if I just revise it for you, TB is going to come, that is going to activate reticuloendothelial system. Reticuloendothelial system is going to get activated, that is going to activate neutrophils. These neutrophils are going to form the epithelioid cells. Then epithelioid cells are going to form the Langerhans cell. The Langerhans cell, Langerhans, Langerhans giant cells are responsible, okay, for what is going to happen next. Lysis is going to be there, necrotic tissue is going to come into play, and this lysis, this necrotic tissue is going to have what? Then lymphocytes are going to come, and then ultimately it causes what? It causes caseous necrosis. It causes what? It causes caseous necrosis. So this is the problem. This is the entire issue that is going to come. So just remember, this is again the tuberculosis problems, different kind of issues which are going to come, right? After that, after the pathogenesis, the next important part is the clinical features. So one is going to be again the constitutional symptoms. That is going to be the fever, that is going to be the pain, that is going to be night sweats are going to be there. Okay, sorry, fever, weight loss. Okay, fever, weight loss, night sweat, loss of appetite. Okay, these are going to be there. And our PSM faculty used to teach us that you should write significant weight loss and not the weight loss. Okay, significant weight loss should be the word that should be written. So these are the different clinical features which are seen over here. Then you should understand the next part, that is the after clinical features. Let's understand about the investigations. Okay, let's understand about the investigations. So what is important when it comes to investigations? So just remember that there are some stages, you very well know. This is synovitis, then early arthritis, then late arthritis, or you can say advanced arthritis. Okay, can there be subluxation? Subluxation can be there, but not very commonly seen. So if it is synovitis, the investigation of choice is going to be MRI. That's going to be what? That is going to be MRI. Okay, some other things also, what can be there? See, now knee joint is involved, so limp can also be there. Antalgic gait can also be there. There can be shortening also that can be seen. There can be deformities also that can be seen. So these are again important things which you have to be well versed with. Coming on to early stage. So remember, if there is synovitis, and synovitis is in early stage. Okay, if there is synovitis in early synovitis, we have seen that there is a slight flexion which occurs. Okay, there is slight flexion that is going to occur. Okay, which is the position of ease for the knee. Okay, so what happens generally that the patient keeps the knee joint in slight flexion, and that is considered to be as the position of ease for the patient. But in late stage, we have seen that we see, of course, arthritis is going to be there. We see what? We see the your posterior subluxation. Okay, in late stage, we see the posterior subluxation, that is very common. And in this stage only, we have got two more things. One is the flexion of the knee, and other is the external rotation of the knee. Flexion of the knee is going to be there, and external
rotation of the knee is going to be there. So if you remember during the hip time, I told you there is farther deformity, right? But there is no farther deformity in here. This is the flexion and of the knee and the external rotation of the knee, which is very, very common in this case. So what you are going to tell you, okay, now what you are going to tell you, हाँ जी जल्दी जल्दी बताएंगे. So what so now sorry now we will discuss about the treatment part. So what is going to be there in the treatment part? So in treatment, just remember you are going to give anti-tubercular drugs. ठीक है, traction वाला भी same है. ठीक है, you are going to apply the traction also. Then arthrodesis कर सकते हैं. हाँ जी बिल्कुल arthrodesis कर सकते हैं. Can we perform arthroplasty? हाँ जी बिल्कुल arthroplasty भी जो है आप लोग perform कर सकते हैं. ठीक है, and if it is required you can even perform total hip replacement as well. तो ये छोटा सा ही है. Why? Because everything we have already discussed. Okay, we have already discussed. तो मुझे लगता है कि इसमें मैं कुछ ऐड अननेसेसरीली नहीं करना चाहता. So you can just copy paste the tuberculosis का पूरा डाटा from behind and yes of course can write in all these things. Okay, so this is the these are the topics for today. And yes, all those people who are watching us, if there is any topic you want to read, okay, if there is any topic you want to read from your um just give me 1 second, from your tuberculosis and the deformities, then of course let me know in the comment section and we will have a discussion on this. ठीक है, कुछ भी और पढ़ना चाहते हो तो बता दो. Okay, I'll wait for like 1 minute, 1 or 2 minutes, and if there's anything you guys want to study, just let me know. I will tell you. Or I have got some questions. Let's discuss those questions. Okay, from on the basis of 1 or 2 classes which we are done with. Okay, let me just ask you these questions. ठीक है, कुछ पढ़ना है, कोई टॉपिक है, if you want to study I can teach you, otherwise let's start with the MCQs now. हाँ जी, चलो. So let me ask you some of the MCQs. Chalo. Question number 1. What do you mean by felon? So what is felon? हाँ जी. No answers. What is felon? It is the infection of the pulp space of the finger. Okay, it is the infection of pulp space of finger. Okay, chalo. Next question. Next question. Next question. Infection of nail fold is called as. Infection of nail fold is known as. Haji, what you will call as the infection of nail fold? Nail fold infection is called as. Quickly, okay, I'll give you options also. Option A, koilonychia. Option B,
Pyonekia. Option C, Paronychia. Option D, Leukonychia. हाँ जी, quickly tell me, infection of nail fold is known as. अरे अब तो इतना आसान कर दिया, अब तो बताओ. हाँ जी, quickly. So it is called as Paronychia. It is called as what? It is called as Paronychia. Okay, chalo, next question. Next question. Tell me if it is true or false. Okay, tell me if it is true or false. Okay, I'll write some statements. Just let me know if those are correct statements or not. True or false about these statements. Number one, non-healing sinus is most frequently present in chronic osteomyelitis due to presence of sequestrum. Non-healing sinuses, non-healing sinus is present in chronic osteomyelitis due to presence of sequestrum. Is it true or false? Statement second, first statement, second statement, sequestrum is heavier. Sequestrum is heavier than. Tell me true or false. Sequestrum is heavier than live bone. Is it true or false? Next, involucrum is live, dense, sclerotic periosteal bone around the sequestrum. Involucrum is, just look at these words. Is it true or not? It is sclerotic. It is live. It is dense. It is periosteal. Is it true or false? Just let me know in the comment section. And last, chronic osteomyelitis can present with amyloidosis and sepsis. चलिए quickly tell me if these are true statements or not. जल्दी जल्दी बताएंगे if these are true statements or not. So this is a true statement, this is a false statement. Why? Because sequestrum is lighter than the live one, not heavier. This is a true statement, this is also a true statement. Coming on to the next question, bache, next important question. Cloaca is present in. Cloaca is present in. Your options are involucrum, sequestrum, involucrum, sequestrum, myositis ossificans, chronic osteomyelitis. E option is more than one correct. Chaliye, quickly tell me what is the correct answer. What is the correct answer? What is the correct answer? Yes, tell me. So the answer is more than one correct because it is seen in chronic osteomyelitis. It is seen in involucrum. Okay. Chali. Coming on to the next one. Regarding tubercular osteomyelitis, which is the true statement? Regarding tubercular osteomyelitis, which is the true statement? कौन सी स्टेटमेंट सच्चाई की ओर इशारा कर रही है रिगार्डिंग ट्यूबरक्यूलर or rather I should say which is not the true statement, which is not a true statement. कौन सी जो statement है वो ठीक नहीं है regarding tubercular osteomyelitis? Remember, first, it is secondary TB. It is secondary TB.
क्या ये सही है या गलत है? इट इज सेकेंडरी टीबी। नेक्स्ट, periosteal reaction is seen. Periosteal reaction is seen. Next, sequestrum is common. Sequestrum is uncommon. Last but not the least, minimum inflammation is there. Inflammation is minimum. All right, so quickly tell me what is true. हाँ जी, जल्दी बताएंगे what is true. So the answer which is true is this: periosteal reaction is seen. Periosteal reaction is not seen. There is no periosteal reaction that occurs in TB. There is no periosteal reaction that occurs in TB. Okay, tuberculosis mein there is no periosteal reaction which is going to be there. Coming on to the next part, that is chondrolysis. Okay, chondrolysis is seen in Chondrolitis is seen in options: TB knee or TB arthritis, syphilitic arthritis, septic arthritis, in adults, chondrolitis, chondrosarcoma, chondrosarcoma, septic arthritis in infancy. हाँ जी, quickly tell me, where will you see this? कहाँ दिखेगा आपको? Where will you see this? Again, I'm getting no answer. The answer is septic arthritis in infancy, which is also called as Tom Smith's arthritis, which is also called as Tom Smith's arthritis. Okay. Coming on to the next question. Next question is most common joint involved. Most common joint involved in septic arthritis. Most common joint involved in septic arthritis is, हाँ जी, and most common joint involved in TB arthritis is, quickly tell me, TB arthritis में most common joint कौन सा है and most common joint in septic arthritis is which one? So in septic arthritis it is, हाँ जी, it is knee joint. Knee joint in adults and in children. हाँ जी, बच्चों में कौन सा बच्चे? बच्चों में it's the hip joint. Okay, whereas the TB arthritis, if they ask you, the most common one is going to be what? हाँ जी, most common one is going to be spine. And which spine? So if it is children, C for children, C for cervical spine. C for children, C for cervical spine. And then if you ask for adults, in adults, which is the most common? Yes, it's going to be dorso-lumbar spine. Dorso-lumbar spine, which is more common than dorsal spine, which is even more common than lumbar spine. Dorso-lumbar spine. Okay. Okay. Right. Chaliye. Next question. Next question. False statement about False statement about TB spine. False statement about TB spine. Okay, first statement. There is excessive lumbar lordosis. First statement. There is excessive lumbar lordosis. Then back pain. Back pain is earliest symptom. Back pain is earliest symptom.
It is secondary to pulmonary infection. It is secondary to pulmonary infection. Then one more, um, dorso-lumbar spine is most common. हाँ जी, what is the most correct answer? Correct option कौन सा है? जल्दी से बताएंगे. Yes, correct option. Correct option बताएंगे. Coming on to the next question. TB of spine involves least commonly dash part of spine. So which part of spine is something which is least commonly involved? So my options are body, lamina, pedicle, spinous process. Body, lamina, pedicle, spinous process. हाँ जी, जल्दी जल्दी से बताओ. सो आंसर इसका क्या है? एक्सेसिव लंबार लॉर्डोसिस नहीं होता. द करेक्ट आंसर इज काइफोसिस. मैंने पहले भी बताया आपको. कुबा, ओके, hunchback is going to be there. TB spine is least commonly going to involve this part of the spine. So which is the part of spine which is least commonly involved by TB? TB इसको कभी भी इन्वॉल्व नहीं करता या बहुत कम इन्वॉल्व करता है. दैट इज स्पाइनस प्रोसेस. दैट इज व्हाट? दैट इज स्पाइनस प्रोसेस. ठीक है, किसको इन्वॉल्व सबसे कम करता है? दैट इज स्पाइनस प्रोसेस. कमिंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन. ओके, false statement about false statement about tuberculosis and paraplegia. False statement about tuberculosis and paraplegia. Paraplegia is commonest in TB of upper thoracic region. A. Paraplegia is common in upper thoracic TB. Next, paraplegia is caused by spinal cord edema. Most common sequel is bony ankylosis. Most common sequel is bony ankylosis. Most common sequel is fibrous ankylosis. So tell me which is the correct answer. So the correct answer is this. Why? Because the correct statement is this. That means most commonly we see bony ankylosis. Okay, of course fibrous ankylosis can be there, but bony ankylosis is more commonly seen. Okay, more commonly seen. Okay, chaliye next question. Earliest sign. Next question. Earliest sign of involvement. Earliest sign of involvement of TB thoracic spine. Earliest sign of involvement of TB thoracic spine is. So your options are extensor plantar, bladder dysfunction, extensor plantar, bladder dysfunction, sensory loss, motor weakness. Okay, so quickly tell me which is the earliest manifestation that you will see in the TB of thoracic spine. Okay, quickly tell me this, and simultaneously I'm writing the next question. Poor prognostic indicator. Poor prognostic indicator of Pott's paraplegia is.
poor prognostic indicator of POTS paraplegia is early onset, early onset, healed disease, wet lesion, active granulation tissue, active granulation tissue. So, Hanji, quickly tell me which is the good, poor prognostic. Poor prognostic. So here the answer is extensor plantar. Remember, this is the earliest sign. So E say E. Okay, E extensor and E is earliest sign. And what about poor prognostic indicator of poor, POTS paraplegia? Healed disease. So if you are getting the disease healed at the time of presentation of the symptoms, this is the poor prognostic indicator. Poor prognostic indicator which you have to remember. So let me just discuss with you some indicators of POTS paraplegia. Okay, so this you can incorporate in your exam. So let me just write down. Okay, I will ask you if you know. Just give me one. Uh, um, I mean, Batate jana if you know this. Better prognostic and poor prognostic. First comes the cord. Okay, status of the. Okay, first of all I'll write all these things. So cord, degree of cord involvement. Okay, then duration of cord involvement. So cord involvement degree, cord involvement duration. Okay, then you have onset type, age. ओके, ऑनसेट कैसा है, टाइप कौन सा है, एज कौन सा है, व्हाट इज द जनरल कंडीशन, वर्टिब्रल डिजीज. ओके, जनरल कंडीशन ऑफ द पेशेंट. देन वर्टिब्रल डिजीज कैसा है, देन व्हाट एल्स, देन कॉर्ड ऑन एमआरआई, हाउ इज इट. Okay, then intraoperatively what you are finding. Okay, so these are important things which you have to understand. So the prognosis is going to be better if the degree of lesion is like partial. Okay, if the degree of lesion is like partial. Okay, partial means what, that only the. Okay, partial means what, that either sensory or motor is involved. Whereas poor, if it is completely involved, that means the sensory is also gone, that means the motor is also gone. Okay, then duration, of course, if it is like more than 1 year, it's a poor prognosis. Less than 1 year, it's a good prognosis. Then onset should be like early onset. Okay, then it's a better prognosis. Late onset, it's a bad prognosis. Type, like for example, occurring in older patients, poor. Younger patients is good. Okay, then remember, general condition should be good. If the general condition is good, okay. If the general condition is not good, if it's bad, then of course it's a poor prognosis, right? That means you have to understand that it should be an active ulcer, exudative ulcer. Okay, active ulcer should be there, exudative ulcer should be there. Okay, wet ulcer, what you call it as. Okay, whereas if it's healed ulcer, then of course it's going to create some problem. Vertebral, then angle you should see less than 60 degrees of kyphosis. Okay, vertebral disease, if they ask, less than 60 degree, more than 60 degree of kyphosis. Okay, like this. Intraoperatively, if you are seeing a wet lesion, of course it's a good prognosis. If it's a dry lesion, of course problem is going to be there. Then if it is a cord on MRI, like if it's a myelomalacia sort of a thing, then it's a bad prognosis. Okay, if there are some cord changes, then it's a bad prognosis for sure. Okay, so this is it. Okay, and let me just try to tell you a little about the ankylosis also. Okay, let me just, so this is going to be the last topic of discussion for today. What is fibrous ankylosis and what is the bony ankylosis? Okay, fibrous ankylosis and bony ankylosis, let me just teach you. So the fibrous one is something that is seen in TB knee, TB arthritis, of course. That fibrous वाला दिखता है आप लोगों को TB arthritis में. It is also seen in rheumatoid arthritis. Okay, rheumatoid arthritis, that is going to be there. Okay, then in this, what happens in fibrous, of course movement is less but it is present. Okay, and pain is going to be present, whereas in bony ankylosis there is going to be no pain, there is going to be no movement that is going to be there. And bony ankylosis is something that is seen in pyogenic septic
arthritis. Okay, pyogenic septic arthritis. It is also seen in TB spine. Okay, so in TB spine, there is bony ankylosis, which we call it as spondylitis. So carefully read what the question is trying to ask you. Okay, then after that, you have to understand that the joint is, because the movement is less, but still the movement is there. That's why it's an unstable joint when we talk for fibrous ankylosis. But if I talk for bony, since there is no movement, this is a stable joint. Okay, there is going to be what? There is going to be a stable joint that is going to be there. Okay, there is going to be okay. So this is, remember, which you have to understand. Okay, so yeah, some of the students, they asked me when I took this ortho class pehle, that what is cox spine. So beta cox spine कह लो, चाहे आप उसको pot spine कह लो, चाहे आप उसको ट्यूबरकुलर स्पाइन बोल लो, एवरीथिंग इज द सेम. ठीक है, सबका एक दूसरे का नाम ही ऐसे है. ठीक है, सो दिस इज समथिंग विच यू हैव टू रिमेम्बर. देन एक दो चीजें और हैं, लेट मी जस्ट आस्क यू. ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन. सो टीबी ऑफ हैंड एंड फुट इज कॉल्ड एज, टीबी ऑफ हैंड एंड फुट इज नोन एज. Okay, TB of hand and foot is known as. Okay, this is are going to be the last MCQ. TB of hand and foot is called as. I'll give you the options. Pott's disease, spina ventosa, fibrous ankylosis, scrophal derma. Hanji, quickly. Last question. And tomorrow we will meet. Yes, tomorrow there is a class. If everything goes well, tomorrow at 5. No, tomorrow we'll have the class early. At 4 p.m. only we'll have the class. Okay, so that we'll end up by maximum 7 o'clock. Okay, so tomorrow 4 p.m. we'll have the class. So quickly tell me the answer of this. TB of hand and foot is seen in, Anji, quickly. TB hand and foot. This is spina ventosa. Spina ventosa. So this is the end of our class. Okay, देखो आज हमने सारा का सारा एमसीक्यूज भी डिस्कस किए, हमने क्वेश्चंस भी डिस्कस किए, हमने क्लिनिकल बेस्ड सिनेरियोज भी डिस्कस किए, इमेज बेस्ड क्वेश्चंस भी जो बन सकते थे वो भी हम लोगों ने डिस्कस किए. तो इसी तरीके से हम डेली बेसिस पे जो है ये इस अच्छे पैटर्न में, अच्छे फॉर्म में हम लोग डिस्कस करते हैं. सो विल मीट यू टुमारो. थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग. गॉड ब्लेस यू. स्टडी हार्ड, बहुत अच्छे से पढ़ाई करो. और क्योंकि like it's really important for you to excel in your life, and there is a small motivational clip also which I have shared on my channel. Okay, so ठीक है, YouTube channel, that is Meducation by Dr Parv. Okay, so you can just go there, have a watch, and we will meet tomorrow. Thank you so much. God bless you. I am on Instagram, I am on WhatsApp, I am there, I am on YouTube also, I am having my email also activated. So this is my email. Okay, so email, if somebody wants to email, so you can just do that. Okay, so this is my email ID. Okay, this is my YouTube channel. Okay, so you can just go there, and of course you can send your queries on that. Okay, sure. Thank you so much. God bless you. Bye bye.